Welcome everyone. Welcome by happy Saturday everyone. Hopefully the weekend is going well. लेकिन obviously it's Almighty Blues FC, a fan channel for all to see. और भाई सब लोग everyone knows that 11 मुल्कों की पुलिस किसके पीछे है? भाई डॉन. लेकिन डॉन कौन है? हम सोच रहे थे for the last few transfer windows हम सोच रहे थे भाई it has to be Kylian Mbappe. Definitely that is the Don. लेकिन नहीं भाई, यहाँ पर डॉन समझ रहा है खुद को obviously the one and only yes Romelu Lukaku for everyone out there जो wait कर रहे हैं as to who is that. भाई let's be real, Romelu Lukaku the biggest fraud in football history period. भाई अब 11 मुल्कों की पुलिस है जी भाई, बहुत सारे क्लब्स भी साथ साथ में ढूंढ रहे. एंड फॉर दोज ऑफ यू डू नॉट नो, रोमेलो लुकाकू जो बोल रहा था भाई चेल्सी इज माय ड्रीम दिस दैट एंड देन ही केम बैक एंड डिड व्हाट दिस इज doing this to Inter Milan as well, because Inter Milan यहाँ पर उसको फोन कर रही है और भाई बोल रहे नहीं मैं तो बिजी हूँ भाई यूवेंटस में बात करने के लिए. भाई जैसे ही इंटर मिलान ने बुलाया ना रोमेलो लुकाकू को वापस से कि भाई हो गया ट्रांसफर हो गया, रोमेलो लुकाकू इज लाइक I'm out of here. ओ माय गॉड भाई, ये बंदा क्या अजीब नमूना है भाई. अगेन वेलकम बैक यार, वेलकम बैक टू एवरीवन. हम डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली, दिस इज एन ऑल ब्लू शो, सो विल बी डिस्कसिंग ऑब्वियसली चेल्सी, मैन सिटी, पीएसजी, इंटर मिलान, बार्सिलोना भी थोड़ा बहुत, एज वेल एज नापोली एंड अ फ्यू अदर्स. तो भाई सब लोग लेट्स हिट दैट लाइक बटन सबको. यस एब्सोल्युटली, मैं तो भाई हंसी रोक नहीं पा रहा सुबह से, और आई नो द मेंबर्स इन द चैट नो इट, मैं ऑलरेडी डिस्कस करता हूं उनके साथ. भाई लुकाकू इज दैट पर्टिकुलर फेक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो बेसिकली आपको चीट करता है वंस एंड यू नो दैट द पर्सन इज गोइंग टू चीट अगेन, फिर भी आप बार बार उसके पीछे जाते हो. भाई इंटर मिलान लास्ट टाइम भी आप सीख गए थे भाई व्हाट ही डिड टू चेल्सी, बट नो दे ही इज डूइंग दैट अगेन. बट एम आई कंसर्न? नॉट रियली, लेकिन हाँ अगर जाता नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी. उसके बारे में बात करेंगे, हाउ इट रिलेट्स टू एम्बापे सिचुएशन, कहीं ना कहीं इवन अ व्लाहोविच सिचुएशन, हम उसके बारे में बात करेंगे. लेकिन इज देयर सम न्यूज रिगार्डिंग काइसेडो? देयर इज पोटेंशियल कंपटीशन, कितना सच्चाई है उसमें? व्हाट इज द बैकअप फॉर चेल्सी, इवन टू सम एक्सटेंट लिवरपूल, एंड व्हाट अबाउट रायन, चेरकी, डिबाला एंड द अदर्स. तो भाई बहुत सारे ट्रांसफर न्यूज है, एंड आई नो कैसी के बारे में कुछ न्यूज आ रही है, Pavard, of course, Hakimi, तो lot of news is there absolutely. अनिमेश क्या हाल है भाई? And yes भाई, आप लोग ने मेरा देखा यह नाम भाई, I am the Sapera bro. I am the Sapera. Lukaku does to Inter what he did to Chelsea bro. Inter Milan, wake up. देखो भाई कहीं ना कहीं, let's be real, they deserve it. And sorry Inter Milan fans, you know exactly what I mean. अगर you exactly feel the pain that we felt last time. लेकिन भाई सब लोग big up Inter fans abusing Darren, thanks for super chat यार. Inter fans abusing that useless Todd Buffalo fell in love with football again. हाँ मैं देख रहा हूँ भाई Inter content creators and fans के थोड़े बहुत कंटेंट देख रहा हूँ, टू जस्ट सी व्हाट इज द टेक. लेकिन हाँ फहद, यस एब्सोल्युटली, थैंक्स डेरेन, अगर बिग शाउट आउट यार डेरेन को एज वेल. ऑफ कोर्स सुपर चैट डेफिनेटली हेल्प्स गोइंग बैक टू द चैनल. लू मैन इन द हाउस, व्हाट्स अप? यस संजीव एब्सोल्युटली. सो हम मेसी इज गोट भाई, काफी न्यूज है आपके बारे में भी इन टर्म्स ऑफ बार्सा न्यूज. लगा के इतना पैसा कमाएगा किसी ने so भाई that is for real. कहीं ना कहीं it is a major scam by Lukaku scam, absolutely. इंटर मिलान को भी धोखा दे दिया इस अब यूवेंटस के पीछे भाई, यूवेंटस और भाई सब लोग. why are we talking so much? total double standards bro, total double standards. this is Juventus, आपको सब याद है, I think it was Inter Milan versus Juventus. मैच में क्या हुआ था? यूवेंटस फैंस अपेरेंटली ने रेसिस्ट चांस किया था स्टेडियम में against Lukaku, and I remember Lukaku was like this or something like that, right? What was all that? What was all that rubbish, bro? Agar Lukaku really does not believe in it, I don't know. I know kahin na kahin you don't take the entire club based on the fans behavior, few fans behavior, lekin it was quite recent yaar. Lukaku रेसिस्ट चांस भाई, नॉट गोइंग टू यूवेंटस, नहीं जाने वाला. और यहां पर क्या डिफरेंस है? यूवेंटस हैज सपोजिटली बिड 37.5 मिलियन प्लस 2.5 मिलियन एड-ऑन्स, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ यूरोज बात कर रहे हैं. लेकिन कंडीशनल है कि अगर व्लाहोविच को सेल कर पाए दिस मंथ, देन दैट वुड हैपन इन ऑगस्ट. सो आर वी गोइंग टू वेट फॉर लुकाकू टू गो इन ऑगस्ट? मतलब रियली चेल्सी फैंस, आर वी रियली ओपन फॉर दैट एज वेल? जस्ट नॉट दैट. लेकिन अगेन भाई, no, not ki Chelsea, but Inter fans also doing this to Lukaku now.
Pretty sure. Bhai, lekin not just that. All the Inter Milan fans are exactly what Chelsea fans were like. भाई साहब, दिस इज लाइक क्रेजी एंटरटेनमेंट मैन फॉर माई सेल्फ. अगेन मैं खुद को भाई बार बार ये याद दिला रहा हूँ कि दिस इज समवन हु डिड दैट विद अ कपल ऑफ क्लब्स ऑलरेडी. अब देखते हैं. देवेश, यस मैन. यतिन, व्हाट्सअप. होप नोबडी बाइज हिम एंड चेल्सी सेंड हिम टू सऊदी. इनफ ऑफ दिस स्नेक. भाई टू बी ऑनेस्ट, दिस गाय डिजर्व्स दैट. यस, दैट्स ट्रू. लेकिन सऊदी में बहुत पैसे मिलेंगे बंदे को. दैट इज ट्रू एज वेल. ब्रोकन बॉय, व्हाट अ नेम ब्रो. यस, सब लोग लाइक ठोक दीजिए, सब लोग. भाई क्या घंटा आदमी. दैट इज द राइट वे टू पुट. Lukaku is a घंटा आदमी. Absolutely. भाई to be honest, even अपने मोदी जी would be like. इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको. ठीक है, लेकिन टॉकिंग अबाउट मोदी जी यार, मतलब आई डोंट नो इफ दैट रियल इज ट्रू. भाई आई हर्ड नरेंद्र मोदी ने बोला है अबाउट दैट Kylian Mbappe has more fans in India than France, and that's probably true. और उन्होंने बोला Kylian Mbappe. that is a funny one. लेकिन I don't know if it's true. लेकिन हाँ, that is something जो हम डिस्कस करेंगे. What about Kylian Mbappe? किसी का पता नहीं. हाँ, देखते उस पर भी आएंगे. Absolutely. Lukaku started to negotiate with Juventus. Exactly. That's absolutely a snake element यार. Proper snake element है वो. बट कोई नहीं. और क्या बोल रहे हैं आप लोग भाई. लिवरपूल आज थोड़ा ब्लू शो है तो विल नॉट स्पीक इन डिटेल, बट काइसेडो ऑब्वियसली यू नो देयर इज अ स्टोरी वहां पर, तो हम डिस्कस करेंगे काइसेडो के बारे में फॉर श्योर. अगेन भाई सब लोग जो भी जुड़े हैं, अगेन लेट्स हैव अ क्विक लाइक बटन का ठोका. तो भाई लेट्स हैव अ proper set of likes pressed in the stream as well as in the community post. Everyone, Adri, what's up man, nice to see you. बहुत दिन हो गए. Why we talking about him is not important. Chelsea more talk about training and transfer to connection. बहुत सारे बातें करने हैं सुशांत. मतलब I don't think I will restrict myself and restrict yourself bro, what to talk and what not talk. It is an all blue show and we'll be talking about a lot of things. कहीं ना कहीं I am कहीं ना कहीं, yes, we should not talk about things which are totally against us. Absolutely, I get it. But come on, let's not be so strict, guys. It's for fun. And the reality is that Inter fans कहीं ना कहीं वो pain थोड़ा सा feel कर रहे जो हमने feel किया था. तो I would definitely like to take an opportunity, bro. Opportunistic, yes. Not just Lukaku, Ankit, or rather Sapera from Almighty Blues FC is also an opportunistic. Absolutely, bro. This guy, I very rarely use this term, yaar. Again, big up to everyone who's joined. Lekin I very rarely use this term. Why? A hatred for a footballer is not acceptable. But this guy deserves that. Trust me, he does. Bhai, mana maryada ye no illa. For people in Bangalore who know exactly what I'm saying. Absolutely shameless bugger. He's an absolutely shameless bugger, Lukaku, and that's why we're talking so much about him. And to be honest, I just wanted to have fun as well. Because kahin na kahin, I'm happy that Inter Milan, jo chindigiri karti bahut zyada, भाई फाइनली उनको पता चला what it is to deal with this guy, an absolute ass of a guy, absolute ass. But anyway, let's see whether it comes or not. But हाँ, जॉ फिलिक्स के बारे में आएंगे absolutely. तो भाई we'll come to every particular blue story absolutely 100%. लेकिन सबसे पहले let's hit that like button. भाई मैं देख रहा हूँ likes काफी कम है. Mods, members, subs, my fam, come on. घंटा जानते हैं लेकिन भाई घंटे आदमी से ज्यादा जानते हैं हम काका से. तो लेट्स हिट दैट लाइक बटन. कम ऑन गाइस, लेट्स हिट दैट लाइक बटन फॉर श्योर. लेकिन हाँ, while we delve into the Lukaku saga further on, अगर टाइम मिले तो भाई let's come back to reality in terms of the blue transfers. तो भाई Mbappe, Lukaku etc sagas तो हम definitely will be touching. But talk about sagas, what about Caicedo? भाई क्यों ये इतना खींच क्यों रहा है? मतलब काइसेडो कुछ ज्यादा ही नहीं खींच रहा. आई नो दैट कहीं ना कहीं फेब्रिशियो ने वापस बोला है दैट नहीं, लिवरपूल वाले स्टोरीज अनट्रू है, ही इज टॉकिंग ओनली टू चेल्सी. सेम थिंग इज सेड अबाउट व्लाहोविच टॉकिंग ओनली टू पीएसजी, राइट? लेकिन लेट्स बी रियल अबाउट इट भाई, थिंग्स गेट लंबा होते एंड इट्स नॉट लाइक अ डेक्लन राइस सिचुएशन जहां पर थिंग्स हैव बीन अग्रीड अपॉन फ्रॉम ऑल द पार्टीज और जस्ट द फॉर्मेलिटीज आर पेंडिंग. नो, यहाँ पर क्लब्स डिस्कस नहीं किए अभी तक, मतलब डिटरमाइन नहीं किए व्हाट विल बी द फी. तो देयर इज अ स्लाइट कंसर्न यहाँ पर बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ न्यूज कमिंग इन दैट बिकॉज Trent is moving into a different role in terms of midfield for England, Klopp might just be open for a different kind of a midfield and he may not have that heavy metal football. Although मैं believe नहीं कर रहा, मैं कल भी बोला था on another channel, by I don't believe that is true, but multiple sources saying we cannot deny that. अभी भी looks like it.
लिवरपूल इज नॉट अ काइंड ऑफ क्लब विच विल प्ले 100 मिलियन. लेकिन ये भी है कि ब्राइटन जब लिवरपूल से बातें करती है तब तो भाई बहुत कम हो जाते हैं वो प्राइस टैग्स. तो भाई वी ऑल नो दैट्स अ फैक्ट. और चेल्सी के लिए अलग ही प्राइस टैग होता है. तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड एज वेल, बट बजट में उनका लाविया है. तो लाविया इज व्हाट दे आर गोइंग विद, along with maybe a potential Amrabat. Gravenberg story is 100% false है, लेकिन they might actually do a Caicedo अगर they are able to make 50 million out of Fabinho और Henderson. और as things stand Fabinho को मना किया गया है कि भाई तेरी जरूरत नहीं है in the pre-season for the time being. So that means that they are getting big money. So does that mean they are stepping into Caicedo territory? और कहीं ना कहीं they might just play with 3-3-3-1 and not a general 4-3-3. अगर वो करते हैं 3-3-3-1 खेलते हैं, then you never know. Caicedo they might just come in. लेकिन again I would like to think कि Caicedo definitely अपना ही बंदा है. But on the other hand, remember कहीं ना कहीं ब्राइटन, लिवरपूल और चेल्सी तीनों ही, two blue clubs out of the three, are involved here. Why? Because Levi Colwill, Brighton and Liverpool are interested. So कहीं ना कहीं I think they will try to, और इसलिए शायद लंबा चल रहा होगा because Levi Colwill has just kind of returned right from the under 21 Euros. तो I don't think वो clarity है. तो I think ये कहीं ना कहीं it will be interrelated as soon as Levi Colwill का sort हो जाए. I know Chelsea का preference to keep him and Liverpool को तो definitely sell करना. लेकिन अगर Brighton लेना चाहेगी then we might be able to get Caicedo in kind of return थोड़ा, unless we kind of pay something like 70 million plus Levi Colwill, we may not get. लेकिन again things are saying कि यार ये दो अलग चीज. जैसे लुकाकू का सीन है, वहां पर यूवेंटस हैज गिवन 37.5 मिलियन प्लस 2.5 मिलियन, लेकिन वो ब्लाहोविच इंक्लूड नहीं कर रहा वो डील में. ठीक है, ब्लाहोविच इज अ टोटली डिफरेंट थिंग. और एज थिंग्स स्टैंड फेब्रिशियो ने बोला है दैट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन ब्लाहोविच एटलीस्ट ऑफिशियली एज ऑफ नाउ. ठीक है, तो अभी के लिए इट इज जस्ट पीएसजी, मे बी इवन बायर्न म्यूनिख और स्पर्स एज बैकअप. ठीक है, ब्लाहोविच का वो सीन है. बट एनीवे देखते हैं. घंटा गैंग व्हाट्स अप? यस यस एब्सोल्युटली. Vlahovic for 35 million plus Lukaku could be a very good deal. I believe as well. लेकिन मुझे नहीं लगता होने वाला. I would rather say चेल्सी का प्रायोरिटी अभी है Caicedo, जो हम अभी बात कर रहे हैं. I think Caicedo getting him over the line. और I think Levi Colwill को नहीं देना, Caicedo को कन्विंस करना. और Caicedo is convinced, लेकिन Brighton को कन्विंस करना that you are getting a good fee for Caicedo despite not getting Levi Colwill is the key. Meanwhile अगर लिवरपूल एक अच्छा ऑफर के साथ आती है, and यहाँ पर लेवाई कॉलविल ऑलरेडी डगमगा रहा है कि कहां जाऊं. सो ऑल ऑफ अ सडन ब्राइटन माइट गेट द बेस्ट डील. इमेजिन, आई नो वो होने नहीं वाला. इमेजिन लेवाई कॉलविल गोइंग टू ब्राइटन. ठीक है, मे बी एट अराउंड 50 मिलियन. वो कैसे आएंगे 50 मिलियन इन द डील ऑफ 75 मिलियन व्हिच लिवरपूल गिव्स टू से ब्राइटन फॉर काइसेडो. लेकिन अगेन एज थिंग्स स्टैंड बहुत ही डाउटफुल लग रहा है, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए शायद वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी ट्रांसफर्स इन टर्म्स ऑफ चेल्सी राइट नाउ, अपार्ट फ्रॉम मे बी अ चेरकी, जिसके बारे में हम बात करेंगे फॉर श्योर, एज वेल एज डिबाला. तो दोज आर टू. बट इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइकर अभी के लिए श्रेय, द न्यूज इज दैट Pochettino wants to see them in pre-season. That is obviously आपके निकोलस जैक्सन, आपके ब्रोया एंड एंकुंकू, एंड देन डिसाइड. मीनवाइल अपना भाई कौन इंटर का स्नेक भाई sort the situation. That is what it happens. And by the way, talk about another striker, by Aubameyang basically might finally move to a different club. अभी उड़ती खबर आई है that there is interest in Aubameyang from Marseille, guys. तो that will be interesting. Remember, Aubameyang और Lukaku दोनों ही convinced नहीं थे with Saudi. So that is where I think the Marseille deal will really help. Hopefully it's a good deal यार. मतलब I think we'll take about 7-8 million for Aubameyang. क्या बोलते हो आप लोग, क्या होना चाहिए? Game of the season Inter versus Juventus. बिल्कुल. Okay, 1 minute motivation बोल रहे हैं. फ्लोरेंटिनो लुइस जा रही है लिवरपूल. Well, again, I've been reading a lot of news, a lot of names. 1 minute motivation. There is Kefren Turam. There is, of course, Manu Kone. Then there is Sofian Amrabat as a backup. Romeo Lavia, I believe, is probably one of the first options. अगर you are getting through all the other stories जो आपको expectation है. लेकिन अगर लेवाई कॉलविल नहीं मिलता है, they might just actually a bid for Caicedo, different players, but कहीं ना कहीं it might be a win-win for Brighton. So they might just get him a little bit on a cheap, because यहाँ पर if they're able to get Levi Colwill Brighton, that is, I hope not. लेकिन देखते हैं. पहले क्या होगा, पोपटलाल की शादी है, कैसेडो तो चेल्सी. होपफुली कैसेडो ब्रो.
Why would Inter fans be angry they didn't buy Lukaku for 100 million? नहीं. देखिए, there is definitely a case. It's the second time that's happening. Remember, there were the ultras of Inter, जो last season भी when he was going back, or rather when he was leaving for Chelsea, there were a lot of Inter ultras on the streets. Remember that news as well. साथ साथ में context समझिए. Understand as a fan. Don't understand as the Inter official. Don't understand as an Inter club. Understand as a fan. Inter fan basically has been cheated by him twice. Almost literally, right? Once when he left for Chelsea, ठीक है, वापस आया है, and of course he said in the interview that I love Inter etc. what not, ठीक है, he kind of made up for it, although झूठ था, अभी सच्चाई आ गई है. अच्छा, सेकंड चीज क्या है, अभी all what he did for the last 6 months was what? Absolutely बुल्ला. क्या था वो? तो भाई it's clear, and even समर में भी बोलते आ रहा है इंटर जाना है, इंटर जाना है, इंटर जा रहा है. यहाँ यूवेंटस जो जहां के फैंस बेसिकली उसको रेशियली अब्यूज किए, he did that. So guys, there is a huge understand from a fan. Of course they'll be pissed off, and I'm already speaking to a couple of Inter fans to tell that, by the way. I can confirm that. Lekin football is funny. I remember giving a lot of hate when I was very literally teenager. I remember to Fabregas, when Fabregas used to do things to Chelsea. Lekin last time we loved Fabregas. So that's football for you, everyone. Okay, let's see. We'll just take. Bye, everyone. You can always put a super chat if you want me to prioritize. And of course, I'll try and take as many comments as possible. And of course, big up to the members and mods, every sub here. Nathan warned me so much. I remember last year speaking to him as well. Big up to Sports and Nathan, absolutely. Well, Fabinho, the reason is because I think he's on that downward graph. जो आपका Brozovic का है, Fabinho का है. They are very good players, but yes, कहीं ना कहीं फुटबॉल इज ऑल अबाउट मनी दीस डेज, एंड कहीं ना के प्रोजेक्ट्स बहुत अट्रैक्टिव होते हैं. इसलिए भाई आर्सेनल बहुत, आई नो आज अनाउंसमेंट हुए भाई बड़े बड़े, तो आर्सेनल बहुत अट्रैक्ट कर लिए. फॉर मी, लेट्स बी रियल, प्रोजेक्ट चलो ठीक है, अच्छी बात है. कितने प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुए भाई? प्लीज लेट मी नो हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स हैव बीन सक्सेसफुल. सो कहीं ना कहीं आई थिंक दीस क्लब्स माइट एक्चुअली हैव मेड अ मिस्टेक, बट लेट्स सी. I genuinely believe that Liverpool cannot afford to lose both Fabinho and Henderson in the same window. I think बहुत ज़्यादा experience from the midfield, the entire midfield changing is also not good like Chelsea. But let's see, we'll talk about that. Barcelona Luis Figo transfer saga was worst for us, but Lukaku surpassing everyone. Bhaiya, yes. And we'll talk about Barca as well, Sanjeev. Absolutely. I have news for you as well. Really hoping big for Broya. Yeah, but again, injuries के बाद में तो jury is out वाला चीज अब देखते क्या होता है. Yes, 100%. Pudin, क्या हाल है भाई? Nice to see you always. Yes, Messi is good. Looks like it, and we'll be discussing that for sure. We'll come to थोड़ा बहुत हम इंटर और चेल्सी के बारे में बात करें थोड़ा. Then we'll come to PSG, Barca as well as other blue clubs. You can't keep snakes in your backyard and expect them to only bite your neighbors. Oh my God, भाई हो जा, एक और हंसी हो जा भाई, बंद कर रहा है. अरे भाई लकाका तो भाई क्लिफर्ड मैन, sorry man, I missed the super chat. I'm taking it out. Clifford always supporting the channel. Big up bro. What's up? How's your weekend going? Going to be a very competitive season. Of course. There's a lot of clubs, not just the blue clubs भाई. काफी red and certain maroonish clubs भी अच्छे कर रहे हैं भाई. काफी लोग अच्छे कर रहे हैं. In fact, to be honest, the premiership is going to be really difficult this time. But let's see. Omar in the house. What's up? अच्छा defense is priority with attack like City, Arsenal. Okay, then let's talk about that for sure. Chalo. Again, we'll come to the predictions and other things towards the end, and Abhishek as well. Big up here. By the way, talking about Abhishek, by kal hopefully we'll do a who am I as well. Do not forget that. Hopefully the second contestant is also available. We have one contestant available. I'm going to confirm that tomorrow. Lekin even on Almighty Sports, hopefully we'll be back with the quizzes. Pudin, thanks man for the super chat as well. Not just Clifford. Darren, is Enzo and Caicedo enough for us? That is a big question. देखिए अब आ जाते हैं दूसरे न्यूज पर. Yes, my blues and even neutrals आप लोग बोलिए. मतलब what should Chelsea do? I know Ryan Cherki is more like a cam. ठीक है, he's a two-footed cam. Really, that's what he plays. ठीक है, लियोन का अच्छा प्लेयर है. लेकिन if you are a Chelsea fan or a Chelsea player, whom would you want? Even a Pochettino or even say an EPL fan, would you want? क्योंकि Enzo कहीं ना कहीं एंजो का काम ने बोला है that he can do much more. We would like to see the full Enzo this time, and hopefully we do. ठीक है. And Caicedo, is he a proper DM? Probably not.
he can do much more than that, लेकिन destroyer है काफी अच्छा. In fact, he gets possession out of the opposition, very very high numbers उसके. तो again, hoping and praying that Caicedo हमें मिले. As things stand, there could be a twist for sure, लेकिन अभी के लिए officially नहीं है as per Fabricio. But even if we get that, what पुदिन का question बहुत correct है. मतलब if we go for a Cam or maybe a second striker like a Dybala, will that mean that बहुत gap हो गया between midfielders and the connect that we were missing last time? वापस से same चीज, क्योंकि Felix was not really a central midfielder. Same with Havertz. They were more like, either cams or, playing off the striker वाले players है, second striker kind of people. वहां पर and Mount wasn't in form, remember last time, and fitness as well. So will we have the same problem? So is it better for us to go for another number 6 who can also play as an 8? Rather than going with a Ryan Cherki who's more like a number 10, similar to maybe a Dybala who's more like a number 10 or a false 9. So aap boliye what is needed? I think we will not be able to afford, as per the news, a Dybala, a Cherki, another number 6, a Caicedo. We will not be able to afford these 4. I think 3 ही आएंगे. उसमें I am seeing Ryan Cherki, by the way, अच्छा player again, लेकिन the demand of Lyon is close to 50 million euros. That's a bit too much for an unproven player at the highest level. लेकिन बंदा बहुत potential रखता है. मतलब for me, a Gabri Veiga kind of a player probably suits better in terms of the profile. ठीक है, वो he's more all-rounded. सच में बोलो तो again, we cannot just replace Mason Mount in a nutshell एकदम quickly. अगर किसी को हमें करना था जाना था सोबोसलाई के लिए, सच में बोलता हूँ. लेकिन again, I know I'm okay with the Cam. अगर यहाँ पर Caicedo agrees to play a different role or Pochettino works with him, but then we need a backup as well. I don't think we are as convinced with Caicedo and Enzo defensively इतना. तो मुझे लगता है we might need another midfielder who is more like a number 6/8 rather than number 10. आप लोग बोलिए who is the best deal for Chelsea? मतलब spending maybe Dybala and Cherki में हम मिलाकर spend करें around 65 million euros, ठीक है, दोनों को मिलाकर. Probably 70 million euros दोनों को मिलाकर at best. We could have got just a Szoboszlai, just saying. Maybe that would have been better, but कहीं ना कहीं we know that Pochettino has his thoughts and he's pretty strong on that. ज़्यादा push नहीं कर रहा. Yes, I have to speak to him as well, by the way. Yes, Mbappe situation, by the way, yes. अच्छा चलो, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत मैं skip करूंगा. We'll come back to Chelsea as well, and one club that may move out of Big Six in the future. हाँ भाई, मुझे तो लगता है it might be definitely Spurs, man. Clifford Postecoglou, all due respect to him, but I think it might be Spurs. आप बोलिए again, thanks for the super chat. But Mbappe situation, what has happened again? Not just Narendra Modi, श्री नरेंद्र मोदी ने बोला again. कोई बता दो यार वो सच है कि नहीं है. I don't know. I have seen the video. Narendra Modi has actually said that इंडिया में फ्रांस से ज्यादा एम्बापे फैंस है ब्रो, एंड किलियन एम्बापे. ब्रिलियंट दैट, वेरी क्यूटली फनी ब्रो मोदी जी. लेकिन द फैक्ट बीइंग दैट देखिए एम्बापे जो है ना, इट्स क्लियर दैट ही डज नॉट वांट टू साइन न्यू कॉन्ट्रैक्ट राइट नाउ. ठीक है, वो क्लियर है. अभी टाइम लगेगा. आई डोंट थिंक इट्स अ केस ऑफ वो डेडलाइन जो दिया ना खलीफे ने, वो नहीं होने वाला. अगेन न्यूज आ रही है जो आई डोंट नो वेदर दे वॉच एबीएफसी चैनल ब्रो, एवरीवन. ऑलमाइटी ब्लूज देखकर पता नहीं क्या ही तो न्यूज आ रही है. Breaking news is coming that there is a possibility, again Relevo, I would not really say they are so relevant, but they have said that there is a real possibility कि यार Mbappe sign नहीं करे extension and he gets the bonus that is due from PSG and PSG gets some value out of his transfer. लेकिन होगा जनवरी में. That is a real possibility. So does that mean just like Chelsea are going in without a proper number 9 for the time being, Real Madrid bhi jayegi with just Joselu there? मतलब is that a real possibility with Mbappe joining in January? Again न्यूज है ये आ रही है, तो मुझे बोलना था आप लोग से. मैंने ये बात बोली थी, आपको याद है तो 3-4 स्ट्रीम्स पहले जब हमने एम्बापे का पहला सुना था, दैट कुड बी अ पॉसिबल मिडिल वे सोल्यूशन. आप लोग क्या लगता है? अगेन आई नो कहीं ना कहीं ईयर वुड नॉट बी ग्रेट फॉर एम्बापे अगर वो आधा इधर खेले आधा उधर खेले, लेकिन देयर हैव बीन पीपल हु हैव मूव्ड इन जनवरी. बिग ट्रांसफर्स हैव हैपेंड ब्रो. फर्नांडो टोरेस, आप लोग बोले भाई टोरेस क्या बात कर रहा है यार. Fernando Torres was one among the best in the world when he was at Liverpool, realistically, right? And he moved in January. Remember that. It has happened in the past. It's not impossible at all. Or that might be the practical solution at the end of the day. Again, aap log boliye, what do you all think about that? Or yahan par there are reports, seconding me there. But let's see.
किलियन एम्बापे, मैंने देखा है यार, इट्स रियल मैन, मैंने देखा है किलियन एम्बापे, उन्होंने बोला है दैट फ्रांस से ज्यादा इंडिया में है किलियन एम्बापे के फैंस। अगेन हैट्स ऑफ टू हिम इफ ही सेड दैट। यार Messi is good. Come on, chill, bro. Why do you want to hate and say that deluded, etc.? Chill, man. It's about views, man. Come on, it's an Almighty Blues FC fan channel for all to see always, bro. So I respect everyone, welcome everyone. Be it Barcelona, Real Madrid, Chelsea, Manchester United, Man City, everyone. Of course, I'm a Chelsea fan. Of course, I have a soft corner for Milan as well as Indian team and Netherlands teams. But that doesn't mean that we do not respect everyone's views. We can agree to disagree, लेकिन भाई there's a thin line we have to not cross. So come on guys, let's not have hate in the chat. भाई कितने लोग हैं? 65 लोग यहाँ पर है. Let's have 600 लोग. We can have so many people watching us stream. How? Everyone hit that like button as well as basically share the stream. तो come on guys, सबसे पहले like button दबा दीजिए. इतने अच्छे memes देखने को मिले हैं, इतना अच्छा भाई banter देखने को मिला आप लोगों को, not just Mbappe in the past but now Lukaku as well. Come on guys, let's hit that like button, everyone. Come on, let's hit that like button. I need the likes to get to 100. Come on, my almighty fam. I call you guys for fam because I trust you guys. Absolutely, thanks Abhishek for reminding everyone. And mods, help me out guys. Come on, let's not ignore the hate. If there's a hater in the comment, give him a warning, let me know and give him a timeout because we don't have time for that. Enough of hate, bro. Enough of snakes and haters. We don't need that. We are here on a weekend chill करने के लिए, साथ साथ में बहुत सारे ट्रांसफर्स के बारे में बात करने के लिए. All blue clubs के बारे में is what the show is about. So it's a win-win show. It's not to spread it. Everyone, let's enjoy and let's hit that like button. आपके लड़ाई में भाई मुझे लाइक्स नहीं मिलते हैं, चैनल को अफेक्ट करता है. मैंने पोल डाला आज सुबह, बहुत कम वोट्स आए उसमें. भाई पोल वोट दे दीजिए या सब लोग लाइक कर दिया करो, कम्युनिटी पोस्ट में भी थोड़ा वोट दे दिया करो, बिकॉज दैट इज समथिंग व्हिच डायरेक्टली अफेक्ट्स द एल्गोरिथम ऑफ द स्ट्रीम्स एंड द चैनल. कम ऑन गाइस, वी कैन गेट दैट. वी आर ऑल ग्रोन अप्स. लेट्स नॉट एक्ट लाइक किड्स. यस कपिल, यस यस, लुक्स लाइक इट. अगेन मैं नहीं बोलूंगा बिट्रेड ओवरऑल, लेकिन अभी तक लग रहा है दैट यस ही इज ओपन, कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिस्टिक है बंदा. अगेन कपिल, डोंट मिस द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो इफ यू हैव मिस्ड द स्ट्रीम. एब्सोल्युटली कोई नहीं. लेकिन हाँ, नॉट जस्ट रियल मैड्रिड एंड पीएसजी के बारे में, वी विल बी कमिंग टू थोड़ा बहुत बारसा एज वेल. चेल्सी पर आएंगे वापस से एज वेल एज मैन सिटी. भाई मैन सिटी के बारे में बात करें थोड़ा बहुत. बर्नार्डो सिल्वा टू बारसा, एवरीवन. तो भाई यहां पर एक चीज बताइए बारसा फैंस, ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, ये सोर्सेज इस बार थोड़ा बहुत तगड़े सोर्सेज बोल रहे. महारेस टू सऊदी भी लग रहा है लाइकली, और बर्नार्डो सिल्वा टू बारसा भी अभी ऑल ऑफ सडन लाइकली हो गया. देयर इज सेट ऑफ सोर्सेज जो बोल रहे हैं कि बर्नार्डो सिल्वा का कैंप इज स्टक अपॉन गोइंग टू बारसा दिस टाइम अराउंड. अब रियलिस्टिकली हाउ कैन बारसा अफोर्ड हिम इज अ बिग क्वेश्चन, क्योंकि लीवर्स भाई हो गए लास्ट टाइम. व्हाट अबाउट नाउ? डू लेट मी नो, बिकॉज yes there is a possibility to have exchange of players etc, लेकिन उनके पास कौन है भाई? अगेन फरान टोरेस तो वहां नहीं जाने वाले. आई एम जस्ट सेइंग. तो हाउ विल बर्नार्डो सिल्वा एंड अप इन बारसा? अगेन मतलब यहां पर हम बात कर रहे हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बार्सिलोना आर नॉट एबल टू अफोर्ड अ टॉप सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर. ओरियल रोमेयो अच्छा बंदा है, ही इज एक्सपीरियंस्ड फॉर ला लीगा एब्सोल्युटली, but let's be real, he is not or should not be a starting CDM in a club which is aiming to get to the final stages of the Champions League next season, which is Barcelona. तो ओरियल रोमेयो, और वही नहीं, ओरियल रोमेयो के लिए 8 million was what Girona was asking. 8 million, mind you, 8 million देने के लिए बार्सिलोना हिचकिचा रही है. That's a fact. And that is the reason why Pablo Torre has been spoken about to go in the other direction on loan. तो वहां पर अभी 5 million प्लस पैब्लो तोरे विल गेट देम ओरियल रोमेयो. लेकिन यहां पर ऑल ऑफ अ सडन बर्नार्डो सिल्वा कैसे आ सकता है जब वो कहीं ना कहीं मैन सिटी आर एक्सपेक्टिंग और रादर गेटिंग एन ऑफर फ्रॉम सऊदी ऑफ 80 million euros. आई रिपीट 80. So how will Barcelona afford that? They have to get rid of a lot of players, right? At least a couple of players. कौन होंगे वो couple of players? One, कैसी एज थिंग्स स्टैंड, यस बहुत बारसा सोर्सेज बोल रहे हैं चेल्सी आने वाला है एक्सेट्रा. नहीं, मुझे नहीं लगता. कैसी का स्ट्रॉन्गर लिंक आया है यूवेंटस के साथ. रिमेंबर, यूवेंटस आर नॉट गोइंग टू एक्सटेंड जकारिया, तो जकारिया इज ऑन द मार्केट. सो प्लस मैकेनी इज ऑल्सो बिन इन द मार्केट. तो कहीं ना कहीं
Kessie might be the answer to Juventus. Remember that. So that is actually quite likely. लेकिन Kessie का price कितना होगा at most? Still, I don't think they'll afford Bernardo Silva. Again, बहुत ज्यादा सोर्सेज अब बोल रहे हैं, इसलिए हम बात कर रहे हैं, नहीं तो मैं तो ऑलरेडी नकार दिया था नहीं होने वाला. बट practically how is it possible? Barca fans जो help me out here, but Kessie definitely looks likely to Juventus. देखते हैं आप लोग क्या बोल रहे हैं in the end. Okay, let's see. I'm just kind of skipping a few comments. Bernardo के लिए minimum 50 to 60 million. I think 60 million is minimum, yeah, minimum, absolutely. Arpit बोल रहे हैं might be unpopular. I would prefer Lo Celso or Bernardo. He's cheaper, younger, and fits well in the team. He would not also mind competing with Pedri for a place. Okay, that's one way of looking. लेकिन Arpit, on the other hand, you can also say that अगर वो three weather back system खेल रही है, Barcelona, जो लग रहा है in gameplay as well, going by the signings, there is quite a possibility that they need someone who's played a wing back role. I know Rafinha has done that with Leeds at times, लेकिन is he a starter for Barca level again that we are aiming to be? I don't know. तो वो आप बोलिए. I think Bernardo kind of fits in that profile. Plus, अगर वो जाते हैं with a 4 at the back situation, then Bernardo can also slot in the midfield. Remember, he has also played in midfield. He can play in a 4-2-3-1, a 4-3-3, or a 3-5-2 or a 3-4-3. Bernardo fits in a lot of. I think Bernardo का definitely वो है प्लस पॉइंट है जनरली, इसलिए उसका वैल्यू भी ज्यादा होगा. अपार्ट फ्रॉम जनरल he's a treble winner, yeah, just about. Not that Gundogan wasn't, but just saying. तो देखते हैं. According to reports, it will be a loan move and an obligation to buy next summer. The whole operation will be 65 to 70 million. Yes, yeah, actually the second part of this news is actually not totally false, and that is why we are discussing about it, unlike the previous streams. बर्नार्डो सिल्वा वाला चीज जो है, उसकी कैंप ने एक्चुअली बोला है दैट जस्ट लाइक अ गुंडोगन वांटेड लाइक अ न्यू चैलेंज. रिमेंबर, गुंडोगन को भी दिया गया था नया कॉन्ट्रैक्ट, सेम लाइक काइल वॉकर, बट दे आर डिसाइडिंग टू गो. एंड यस, काइल वॉकर टू बायर्न म्यूनिख इज एक्चुअली गोइंग टू हैपन, क्योंकि पवार्ड इन रिटर्न दे माइट गेट, जो लिवरपूल चाह रही थी. तो ऑल ऑफ अ सडन लिवरपूल का फोकस जा रहा है ऑन काइल वॉकर पीटर्स. जस्ट कनेक्टिंग द डॉट्स यहाँ पर पीपल. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. Predator Gaming in the house. What's up? Yes. Kessie, yes. Kessie, UV looks likely, bro. मुझे लगता है he might actually not be too bad, क्योंकि कहीं ना कहीं 3-5-2 system में there are 3 midfielders in the middle, and that's something which Kessie is okay playing. I think he's okay. He's best when there are 3 midfielders in the central areas of midfield. कहीं ना कहीं he stands out, और वो एक बेस्ट है जो मिलान में हमने देखा ही था previous season. But anyway, अनिकेत आते हैं. We'll come to अनिकेत, क्या हाल है भाई? Nice to see you, bro, always. Big up to Aniket, man. I believe we should focus on Broya Jackson for striker. चलो चेल्सी पर वापस आएंगे for sure. देखते हैं. We are just talking थोड़ा बहुत Barca, so I'm just wanting to take a few more comments based on this. Silva to Barca is a new form of Neymar. Maybe लग रहा था मुझे अर्पित, लेकिन इस बार genuinely लग रहा है मुझे. देखते हैं. लेकिन हाँ, Neymar to Chelsea, bro, that is a fake rumor. That's not happening. Let's be real. Why would he come right now, man? He wants to win and then probably move on, because he's getting to those ages. But anyway, Rifat in the house. Bernardo will join PSG. चलो Bernardo के बारे में बात करें. अभी देखिए, PSG again doing great business, I would say, Rifat. I know that कहीं ना कहीं Mbappe situation is a big situation not solved, और मैंने शेयर किया उसके बारे में. I feel that there is quite a practical possibility that कहीं ना कहीं डेडलॉक हो जाए, they don't reach the solution and they get to basically him moving in January. But again, अगर जाता नहीं जाता, either ways, PSG are more focused on getting another striker. और यहाँ पर नापोली का ओनर ने बोला है that there is a high possibility that if any club comes, that will be PSG for Victor Osimhen. But that's huge money. That will be possible only if Mbappe obviously goes to Real Madrid or some club basically where you get the money. Absolutely, ठीक है. लेकिन on the other hand, Vlahovic जो आपका ऑप्शन था, कोलोमुआनी जो आपका ऑप्शन था, there are other clubs interested in Vlahovic as well now, and that is the key right now. But I think वहां पर फोकस रहेगा because they have already got a Kang in Lee apart from obviously Asensio. तो मुझे नहीं लगता Bernardo is like a priority for PSG. Also, reports are saying, not me, reports are saying, multiple of them as well, कि यार Bernardo का preference if he moves is definitely Barca, not PSG. अगर Barca are able to afford, that is. And Messi को बोल रहे हैं यहाँ पर loan plus obligation to buy होगा, which is not impossible as well. Let's see. I don't
Okay, and if we get Silva, then how will Xavi fit all players? Barca can't play 4-3-3. Only the 3-2-4-1 is the option. I don't know how you can select a three-man midfield from Frankie de Jong. No, so the thing is, it's about Xavi doing Xavi things and them rotating. They have to rotate. Messi is good. There's no other option. And you're right, kahin na kahin, from a tactical perspective. Clifford Border PSG is actually rebuilding well this time. Yes, I actually agree with this comment 100%. Yes, Man City manager, what's up? कैसे हो भाई सब लोग? Don't miss the beginning of the stream, man. अगर आपने मिस किया, watch it back later. Ansh, what's up? Big up आपको. Bernardo is PSG priority. PSG priority, लेकिन Bernardo की priority क्या? That's the bottom line. Again, remember, yes, Luis Enrique is there, but Bernardo is not Spanish. He's Portuguese. Remember that. So I don't think वहां पर इतना equation है obvious वाला, क्योंकि यहाँ पर Bernardo always wanted to go to Barca. अगर वो लोन टू ऑब्लिगेशन बाय होता है then I can see him going to Barca, but at the same time can I see Man City से दोनों जाएंगे मारेज और सिल्वा? नहीं, I don't think so. Barca was also trying for Cancelo. Cancelo is one more option. अच्छा, talking about right backs, अगर कैंसेलो में लोन फी इतना नहीं दे पाएंगे एंड दे प्रॉब्ली सेव इन ऑल दीज फीस फॉर सिल्वा, हो सकता है दे माइट गो विद वन मोर राइट बैक. फ्रेस्नेडा वाज वन मोर राइट बैक, लेकिन आई थिंक द न्यू इज मायोरका का जो राइट बैक है. एनीवन रिमेंबर्स द नेम? क्या नाम है? नाम भूल गया यार. माफियो, क्या नाम है उसका? उससे लिंक हुई है. तो आई थिंक ही वाज द गाय, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, who had a high tackle of Vinicius Junior, is it? Yes, Pablo Mafio. He's the guy that Xavi is liking. So he's someone जो 5 at the back system खेल सकता है. Remember, Mallorca, play that way. So that is possibly on, because कहीं ना कहीं it might come down to the prices. अगर सच में बारसा जा रही है for a Bernardo Silva with a loan, with an option or an obligation to buy. देखते हैं. But no is the answer, निनाद मेरे भाई. No, absolutely. मैड्रिड की आज नहीं बात करेंगे डिटेल में ब्रो. आज ऑल ब्लू शो है, सो वी आर स्टिकिंग अराउंड. आई नो कहीं ना कहीं बारसा को क्यों कर रहे हो आप पूछोगे, लेकिन कम ऑन, ब्लू एंड रेड है तो कहीं ना कहीं हम वो भी डिस्कस करते हैं. बट ऑफ कोर्स हम डिस्कस कर रहे हैं मैड्रिड का न्यूज व्हिच इज रिलेटिंग टू मे बी चेल्सी, पीएसजी, इंटर मिलान, बारसा, नापोली. That's the deal, bro. We'll try to stick to the stream so that's how we basically grow as a fam. And guys, you guys are all part of the fam. तो सब लोग जो देख रहे हैं ना, जो भी नए हैं, consider subscribing. If you're not new, you know what the drill is. Hit that like button, not just on the stream but also on the community post. So come on guys, we have a certain target on the screen. Let's not do a lakaka. Let's basically hit that like button and not show me this. ठीक है everyone, come on. अगर आप ये दिखा रहे हो तो भाई फीडबैक दीजिए. Absolutely. तो मस्ट लव टू एवरीवन. एब्सोल्युटली हमें बहुत डिस्कस करना है अभी भी, तो वील गो ऑन एंड ऑन about a lot of other transfers as well as basically how they'll set up Chelsea, Man City, maybe Barcelona, Inter Milan. वो भी हम डिस्कस करते हैं इन स्ट्रीम्स में, apart from a lot of historical stuff. अगर people are interested, that is okay. Anyway, मैं और देख रहा हूँ यहाँ पर. चलो बारसा से मूव ऑन होते हैं and we'll go to other news. भाई मैन सिटी के बारे में हम बात कर लिए विद बर्नार्डो सिल्वा. आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दैट द न्यूज इज, एंड यस, ब्रेकिंग न्यूज क्या है भाई? लिवरपूल विच माइट कम इनटू द फाइट फॉर काइसेडो. अभी माइट ही है, दे हैव नॉट एज ऑफ येट. ठीक है, इट्स जस्ट अबाउट इंटरेस्ट, दैट्स इट. अगर क्लॉप इज ओपन टू मेक अ चेंज इन सिस्टम, अगर इज नॉट ओपन टू मेक अ चेंज इन सिस्टम, द ब्रेकिंग न्यूज इज दैट लिवरपूल माइट एक्चुअली गो फॉर Calvin Phillips. Guys, that is the big news. Yes, sticking to City news for now. तो भाई Calvin Phillips to Liverpool. Guys, how do you see that fitting? Remember, ये एक ऐसा बंदा है जो hardly खेला फुटबॉल in the last 12 months. But the previous 12 months, he was like, awesome player. मतलब again, I know signed from Leeds, लेकिन याद है Euro 2020 में क्या किया था बंदा. मतलब this guy has a potential. Can he be that CDM? अगर Fabinho और Henderson दोनों जा रहे हैं, which looks like likely now, can Calvin Phillips, क्योंकि Premier League experience ही लाता है, he can play the CDM role, or he's a good distributor. He could be a combination of a Thiago and a Fabinho कहीं ना कहीं. I don't know. Again, not as much as quality, लेकिन that is the news that is one of the options. अगर वो जा रहे हैं with someone experienced, I genuinely believe if they lose Fabinho and Henderson, they will go for someone a little bit experienced. Romeo Lavia is more like a backup. It's not like a starter. Just like Bajcetic is not a starter. तो आप बोलिए again, डिटेल में करूंगा because Liverpool is the red club, but यहाँ पर इसलिए हम बात किए क्योंकि Calvin Phillips is definitely coming from a blue club in Man City. Let's see. मुझे लगता है that is quite possible, and hopefully that is good for us. Why? Because Caicedo, that means that Liverpool will not be interested. Let's see.
Bhai, again, Caicedo, Man City manager. I don't think Liverpool will be the answer. Why? Because again, Liverpool will rather go for two more midfielders as per Klopp rather than going for one big midfielder. Let's see. I hope so. That's true. लेकिन interest है. मैं नहीं बोलूँगा interest नहीं है. That is the slight twist, and the twist is that Levi Colwill might be the answer to everything. यार वो खोलेगा, वो जो गुत्थी है ना वो खोलेगा. Levi Colwill कहाँ जाता है ना, और rather if he stays, that will definitely help move on with Caicedo. Let's see. But yes, let's like the stream. Absolutely big up to Sagnik as always. नहीं इतने नहीं, इसलिए मैं बोल रहा बर्नार्डो सिल्वा और महारेज में एक ही जाएगा. काइल वॉकर जा रहा है तो यहाँ पर ऑपोजिट साइड से पवार्ड आएगा, एंड दैट लुक्स लाइकली लिवरपूल विल नॉट गेट दैट. लिवरपूल गो फॉर काइल वॉकर पीटर्स. और आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर गुड यार, मतलब दे हैव गॉट कोवाचिच, रिमेंबर हम भूल रहे हैं. एंड आई नो दे वर इंटरेस्टेड इन डेक्लन राइस, लेकिन अभी भी यार रिको लुइस इज देयर हु इज डेफिनेटली ग्रोइंग for me, just like Liverpool में Curtis Jones is growing. Absolutely. Amrabat is definitely in the list, लेकिन Amrabat Manchester United के list में ज़्यादा higher up है. Let's see. Inter have decided to leave negotiations for Romelu Lukaku deal of Chelsea to be informed soon. Inter are furious after being informed of talks. Yes, again भाई, as of now yes है, but Lukaku ये message तेरे लिए भाई. Stop it. Get some help. Again guys, I am in that mood bro. ये मौका बार बार नहीं आता. Lukaku deserves that man. अरे गौरव man, what's up? हार्दिक in the house as well. चलो हाँ, हेंडो के लिए. अच्छा ये चीज आप लोग बोलिए, आई नो कहीं ना कहीं ऑल ब्लू शो है, बट बिकॉज वी स्पोक अबाउट अ सर्टेन लेजेंड ऑफ ब्लूज दैट इज एस्पिलिक्वेटा लास्ट कपल ऑफ वीक्स में, हम एस्पिलिक्वेटा को जाने दिए टू स्पेन फॉर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. Why is Liverpool being so strict on Henderson? Is he not the captain? Just asking. Liverpool fans, I know there are a couple of them are there in the chat. आप लोग बोलिए. Is it कहीं ना कहीं disrespectful towards Henderson if he wants to go? I think he's done enough for the club. As a neutral मैं बोल रहा हूँ. Absolute frank opinion. थोड़ा है ये, बट कोई नहीं भाई. ऑल ब्लू शो है तो I will try and give you news again guys. My fam, please understand, we are trying to build a new shows, we are trying to build new content. People keep asking नहीं है, नया content नहीं है, फिर ये हमें तो घंटा आता है. लेकिन just check out our playlist, check out our poll that I put earlier today. There's a lot of other options that you get for any viewer, any consumer on the channel. तो भाई यहाँ पर my fam who are regular at least understand what is an all blue show. I hope that is absolutely fine. But again, much love for everyone. और जैसे ही मैं बोला 5 लोग ड्रॉप हो गए. चुम्मा यार आपके लिए, चुम्मा भाई. Awesome man. Bring on the haters man. हम तो घंटा जानते हैं, right? घंटा गैंग मैन, कम ऑन. चलो अभी और मैं देख रहा हूँ भाई, अगेन इंटर मिलान का हम बात किए थे विद लुकाकू. सर्टन यान सॉमर इज गोइंग टू गो देयर फॉर श्योर. लुक्स लाइक इट इज क्वाइट लाइकली दैट यान सॉमर जाने वाले हैं. अगेन डेमिराल का आई एम नॉट श्योर, डेमिराल वाला हो गया है क्या, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट. लेकिन यहाँ पर एक और मैं चीज बोलना चाहूंगा दैट जब हमने बोला ना काइल वॉकर डेफिनेटली लुक्स लाइक गोइंग टू बायर्न म्यूनिख and Pavard going in the other direction, there is a possibility that PSG lose out on Hakimi, because Hakimi is someone that Man City have been tracking, and there is a chance that Hakimi might be interested in the Man City project more obviously. ठीक है, लेकिन उसको रोल क्या दिया जाएगा, मतलब अगर बर्नार्डो सिल्वा जाता है से PSG, which again looks unlikely right now, it looks more like he either stay or be it Barca. लेकिन अगर वो जाता है PSG, यहाँ पर मैन सिटी इज इंटरेस्टेड इन गेटिंग हकीमी, सो दैट विल बी इंटरेस्टिंग हाउ इट पैंस आउट फॉर श्योर. बट अगेन इंटर मिलान के लिए भाई क्या ही तो बोलूं यार, मतलब अभी भी अच्छा एटलांटा में है, तो आई डोंट थिंक दैट मूव इज हैपेंड, तो दैट इज व्हाई दे वर इंटरेस्टेड इन अदर सेंटर बैक्स. ओके, लाइक चालोबा अगेन. ओके, लुक्स लाइक चलो देखते हैं व्हाट हैपेंस. बट अगेन मैं अगर वापस से आता हूँ चेल्सी में, तो गाइज मिडफील्ड में अगेन आप लोग बोलिए, मतलब रायन चेरकी अप फॉर 50 मिलियन, वुड यू टेक दैट? अगर हम साथ में कर रहे हैं एक एक्सपीरियंस साइनिंग हु प्लेज लाइक अ सेकंड स्ट्राइकर एज अ प्लान बी लाइक दिबाला, एज अ कॉम्बिनेशन 65 to 70 मिलियन इट्स वर्थ इट फॉर श्योर. लेकिन डज दैट मीन हमारी जो डिफेंसिव मिडफील्ड है बहुत ही मतलब वीक लग रही है? मतलब अगेन आई वुड लव टू हियर आउट फ्रॉम द न्यूट्रल्स यहाँ पर. ओके, वी आर आस्किंग 15 मिलियन जस्ट. 15 मिलियन जस्ट नहीं होते मेरे भाई. 15 मिलियन have you मतलब again much respect to him, and he's done lot for the club bro. He's definitely not worth so much in my personal opinion, considering his last 12 months in what he's done, and of course his age.
तो वो एक है. हाँ, अगर इंग्लैंड में रहता देन आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई यू आर आस्किंग, बट आई डोंट थिंक अब्रॉड दे गोना गिव सो मच इन माय पर्सनल ओपिनियन. लेट्स सी. Liverpool lack funds and he's still a nice player for rotation, so definitely Liverpool need money. Liverpool are not for charity. नहीं, that's fair. लेकिन कहीं ना कहीं मतलब Chelsea always believes in, से जॉर्जिनियो हो गया, जिरू हो गया, एस्पिलिकोटा हो गया, पीटर चेक इन द पास्ट हो गया. We actually respect, players who have respected us and done lots for the club. And of course, I'm not saying Liverpool don't. They absolutely do. Of course, they do as well. लेकिन I thought that he's club captain level, bro. There's a difference. So I think थोड़ा बहुत मतलब easier रहना चाहिए in the negotiations, what I'm saying. But again, I can understand if you're not getting a backup who's experienced enough in midfield. जो मुझे लगता है Calvin Phillips might actually be a good target. Let's see. गौरव तो बोल रहे bring a good defensive midfield. Yeah. Manraj, what's up? What's up? Big up to Manraj. Yeah, absolutely. I can't believe going for Conference League rejecting UCL. Oh नहीं, तो मैन सिटी मैनेजर, आई अंडरस्टैंड बीइंग अ मैन सिटी फैन, आप जो बोल रहे हो कैल्विन फिलिप्स के बारे में, बट आफ्टर Kovacic has come, do you see him getting a lot of game time? People are saying Kovacic will play the Gundogan role. I don't think so. I think Kovacic can do that as well as basically a number 6 proper. So he could do both the roles. So I think Kovacic will be rotated in terms of the position he plays. और जो भी वो settle हो जाए फिर वो रखेंगे, लेकिन Kovacic को पहले खिलाएंगे. Of course there is Rodri and Stone, so I don't think वो change करेगा Man City manager. So I think Rico Lewis also growing. I think he's definitely impressed Pep enough. तो मुझे नहीं लगता there's a lot of starting spots for Calvin Phillips. So I think it makes sense for him to go in my opinion. Let's see. Neymar to Chelsea, नहीं यार ये मुझे नहीं लगता होने वाला. Again, a lot of clickbait say that, but I don't think see that. Pavard suits Man City, new tactics more than हाँ नहीं, तो हकीमी अगर आएगा कपिल, Hakimi will not play as the Walker position in City जो कर रहा था recently. Hakimi will play as a almost like a 3-4-1 है ना, तो वहां पर he will almost play like the Bernardo Silva role. That is what Hakimi has played. Remember in the youth days. For people who followed him while he was at Dortmund, while he was at even Real Madrid, people know exactly what I'm talking about. Even Inter Milan to some extent. जो 3-5-2 सिस्टम खेलते थे, रिमेंबर दैट. रायन चेरकी वुड बी ऑसम, टॉप प्रोस्पेक्ट. हाँ, लेकिन अगेन जेराटो कितने प्रोस्पेक्ट्स के साथ जाएंगे, दैट इज माय बिग क्वेश्चन. वी शुड रादर गो फॉर सम एक्सपीरियंस. मतलब अगेन दिबाला और वो साथ में आ जाते, आई डोंट माइंड, बट इफ वी आर गेटिंग ओनली हिम एंड वी आर गोइंग फॉर से लाविया एज अ प्लान बी, नहीं यार, वो बहुत ही इनएक्सपीरियंस है. वी नीड सम एक्सपीरियंस राइट समवेयर इन मिडफील्ड. Yeah, exactly. That's what I said. Sushant पूछ रहा है भैया, one question. If we are signing Cherki who's 19 years old, then why not play our young players who are in the club? Try them. If you want to sign them, sign on experienced one. Yes, that's a good point, Sushant. आपको तो पता ही है Sushant, you have been following the channel long enough to say that I was definitely not in favor of selling a Mason Mount, and he was one of those young players in the past who has proven. Maybe there were a lot of things. Again, I won't go back to the situation. आपने बोला था don't talk about players who are basically not in the Chelsea plan. Fair enough. लेकिन मेरा पॉइंट ये क्या था ना, कि आप पाल पोस के बड़ा करते, फिर आप जाने देते भाई जी ले अपनी जिंदगी. वो क्यों करते? चेल्सी कुछ ज्यादा ही रेस्पेक्ट करती भाई हमारे प्लेयर्स को. ऑब्वियसली बिजनेस भी है साथ साथ में. आई एम नॉट गोइंग टू से कि हम दूध के धुले हुए, ठीक है, वो भी है एब्सोल्युटली. लेकिन आई एग्री विद यू दैट डीएनए ऑफ द क्लब व्हिच इज मिसिंग ना इन द टीम राइट नाउ, which is something which can come from the academy guys. और इसलिए मैं बोलता हूँ कॉनर गैलेगर is a squad player, don't let him go. कॉनर गैलेगर अभी भी न्यूकासल इंटरेस्टेड है because they want to give competition to Anthony Gordon जो उन्होंने साइन किया था. They want to give a more defensive approach, plan B competition by Conor Gallagher signing, क्योंकि remember they did not go for Szoboszlai. I think Conor Gallagher needs to stay because वो एक चीज देगा in terms of knowing what it means to play for Chelsea. Of course, अगर हम जाते हैं ना 5-man midfield, अगर Poch goes the Tuchel way, then he's not a bad player सच में बोलूं तो, लेकिन not a starter in a 3-man midfield or a 4-2-3-1 either. उत्कर्ष व्हाट्सअप. दिशांत देखिए भाई, दो कुछ पूछ रहे थे इंटर फैंस, why should they be angry with Lukaku? Man, Dishant is an Inter ultra as well. I can tell you exactly. Dishant, स्ट्रीम की शुरुआत देखे आप, देखना, मिस मत करना मेरे भाई. बिग अप. Who has more haters, Lukaku or Mbappe? To be honest, I think Lukaku, man. Now I have to say Lukaku, man. मतलब जो किया है ना उसने. And yes, there is a news of Everton as well. Not news नहीं बोलूंगा. An ex-Evertonian is said that basically a legend has said that basically by Everton should go all in for Lukaku. Although मुझे लगता नहीं वो होगा. Absolutely. संगारे again. देखिए भाई, तुराम, संगारे, कोने, वो सब अच्छे नाम है, but I think it's
like too good to be true in terms of them coming और भाई एकदम taking like fish to water. मतलब we need experience of the Premier League at least थोड़ा बहुत, in my opinion. अगर हम जा रहे हैं किसी से. Kovacic likes to run from deep, carrying the ball. Exactly. I don't see him doing exact Gundogan role. I think he'll be a little bit, withdrawn, लेकिन going with the ball absolutely. भाई देखिए, अनदर कमेंट फ्रॉम एन इंटर, और मैंने शुरुआत में स्ट्रीम में बहुत उसके बारे में बात किया है, आप लोग मिस मत करना जो भी मिस किए. कॉलविल का ये सीन है भाई, कॉलविल चाबी है. द बिगेस्ट चेंज दैट विल हैपन इन द काइसेडो सागा विल बी कॉलविल ऋतुराज. बिग अप टू ऋतुराज. लेकिन आई थिंक कॉलविल चाबी है. ब्राइटन होप कर रही है, इसलिए लंबा चल रहा है बहुत कि यार कॉलविल के लिए मान जाए चेल्सी, लेकिन 50-60 मिलियन में भी हम तैयार नहीं है, सिमिलर टू लिवरपूल. ठीक है, तो इफ दे गो लाइक अ क्रेजी ऑफर देन देयर इज अ चांस, बट अगर समहाउ वी कैन होल्ड स्टांस एंड से नहीं कॉलविल अपना बंदा है और काइसेडो के लिए हम एक्स्ट्रा 20 मिलियन देना पड़ेगा उसके लिए, we might actually do that way. Let's see. So hopefully he stays, but abhi bhi Pochettino will see him in training, will see him in the preseason, and then decide and talk to him as well while that's going on. Ritik Arora, bro, kya naam hai? Must yaar. Ritik in the house has joined the Almighty fam again. जो भी members जुड़ते हैं और जो भी रिन्यू भी करते हैं, anyone who's not part of the ABFC members gang in Instagram और ट्विटर, डू डीएम मी यार. सब लोग मुझे डीएम करिए. मेरा इंस्टाग्राम आईडी और ट्विटर आईडी हमेशा 3 आईडीज है भाई, तीनों हमेशा रहता है डिस्क्रिप्शन में. हर एक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा. मेंबरशिप लिंक्स भी रहेंगे फॉर एनीवन हु इज इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग दिस चैनल और ऑलमाइटी स्पोर्ट्स. कंसीडर डूइंग दैट एंड हिटिंग दैट लाइक बटन. बट ऋतिक, आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप अगर मुझे शेयर कर सके तो बढ़िया है, बी इट एन इंस्टाग्राम आईडी और ट्विटर आईडी आपका, तो so that I can add you and we have a lot of conversations, feedback sessions and a lot of fun in the ABFC members group. People exactly know भाई. लुकाकू के न्यूज के बारे में भाई अच्छा डिस्कशन होता है. आई लाइक दैट. भाई व्लाहोविच इज डेफिनेटली ऑन, लेकिन फॉर्मल न्यूज ये है, ऑफिशियल न्यूज ये है दैट Poch wants to see how these guys do, that is Broya and the others, and then decide how it is, but for now I think Vlahovic, I think Bayern का प्लान भी है. और रिमेंबर Harry Kane not just to Bayern, there's a possibility that PSG might be interested in him as well, agar basically Mbappe goes now and not in January, which is looking likely, but let's see. अभी थोड़ा बहुत domino बाकी है, but अभी के लिए we are waiting and watching. Why? Because a certain Lukaku wants to wait अभी के लिए. तो अभी के लिए Juventus तो नहीं जा रहा है immediately, लेकिन he's in talks as things stand because he's gone AWOL. AWOL क्या होता है भाई? Everyone, AWOL is absent without leave. Lukaku Lukaku, as soon as Inter called him, again everyone, Lukaku said this, I'm out of here. अरे भाई साहब, this guy is too much man, absolutely. But big up man, Mudit, what's up, क्या हाल है, how's your weekend going? Priyansh, factors bro, factors. More than confused, I think the guy is opportunistic man, opportunistic भाई, literally shameless बंदा. क्या ही तो यार, थाली का बैंगन भाई, लिटरली एस फ्लिकर. व्हाट कैन आई से मैन, जो भी बोलो, जो भी गाली देना दे दो भाई. सब लोग लुकाकू नहीं, लुका गॉन ब्रो, ही इज गॉन भाई. सबसे बड़ा हरामी कौन? लुका गॉन, दैट इज द थिंग मैन. सबसे बड़ा हरामी है ब्रो. मैं बहुत कम यूज करता हूं ब्रो, ही इज एब्सोल्युटली दैट. पीपल एग्जैक्टली नो व्हाट आई एम सेइंग दैट, बट कोई नहीं. How will Chelsea handle top attacks like City, Liverpool, Arsenal, United? What defensive? भाई मैं इसलिए बोला ना गौरव. The fact is, one thing is, if we sign Cherki or Dybala, will we have enough in terms of FFP or in terms of player numbers जो बहुत ज्यादा चाहते नहीं है to sign another DM as a backup to a Caicedo proper DM? जो हम for whatever reason हम नहीं जा रहे थे for a Brozovic, हम नहीं जा रहे हैं for whatever reason for other DMs. मैं तो बोलता हूँ even Fabinho is a backup if he's ready, आ जाओ. आएगा नहीं, not realistic, but just saying. But I think it matters कि यार आपका डिफेंसिव सेटअप क्या है ऑन दी होल. ठीक है, तो वहां पर इट डिपेंड्स ऑन हुज अ स्टार्टर इन सेंटर बैक. आपका लेवाई कॉलविल, हाउ डज ही काइंड ऑफ सूट द चेल्सी सिस्टम, हाउ डज ही सूट द पॉच सिस्टम. आपके फुल बैक्स, अगेन रीस जेम्स इंजर्ड का न्यूज आया था, लकीली इज नॉट इंजर्ड एंड इज गोइंग फॉर द टूर. सो fingers crossed he'll remain that way, because log bol rahe he can be a captain. That is one reason I don't see him becoming the captain immediately, but again it depends on the defensive setup. But I agree with you, kahin na kahin we need one more defensive midfielder, kyunki agar Dybala or Cherki aa jate hain, one being the backup of the other, then it's good in terms of the attack, kyunki ek x factor hamara ek x factor missing.
Nkunku is one X factor, definitely है. For people who know, who followed my FIFA and Almighty Sports, always बोलता था. But साथ में we need another X factor. We cannot have all the eggs in Nkunku basket. ठीक है. Jackson, Broya, Madueke, Mudryk वो सब है, but proper X factor centrally जो है ना, आपका एक चाहिए एक और, जो दिबाला बन सकते हैं as a second striker, और Cherki as well. लेकिन does that mean that we are playing a very open attacking kind of football? वो एक थोड़ा issue हो जाएगा. Does that mean Enzo को थोड़ा हम restrict कर देंगे? That might be a problem, and I agree with you कहीं ना कहीं we need a DM for sure. Mbappe का भाई अगेन स्ट्रीम देखिए, मैंने बहुत बात किया अंश ऑलरेडी, बट लुक्स लाइक एज थिंग्स स्टैंड अभी भी टाइम लगेगा. इट्स नॉट जस्ट एक हफ्ता जो दिया डेडलाइन पीएसजी ने. हैविंग सेड दैट, यहाँ पर न्यूज आ रही है बाय रेलेवो दैट देयर इज अ प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी दैट ऑल थ्री पार्टी सिट डाउन टुगेदर और डिसाइड कि भाई रियल मैड्रिड इंस्टेड ऑफ प्लेइंग 200 मिलियन हम 100 मिलियन देंगे, लेकिन हम अभी नहीं देंगे, जनवरी में देंगे, क्योंकि पीएसजी बोल रही है अभी इमीडिएटली हम नहीं देने वाले एम्बापे को. दैट माइट बी द रियलिस्टिक थिंग. लेकिन is that good for Mbappe? Probably not. Let's see. अभी भी ट्राई तो बहुत करेगी रियल मैड्रिड. I'm pretty sure on that. Any team wants a center back, Lukaku is there. बिल्कुल मैन, well said guys. Man, चार टोपी हो जाए everyone. हाँ, Ampadu again, Ampadu, Gallagher, those are our other midfielders, of course, apart from Santos, are backups. लेकिन सैंटोस यू नेवर नो, अगर बहुत इंप्रेस कर दे ही माइट बी स्टार्टर. हो सकता है वी माइट बी वेरी इंप्रेस्ड विद सैंटोस कि हम खेले थोड़ा सा फ्लैटिश सेंट्रल थ्री. तो उसमें क्या होगा, सेंट्रल थ्री में यू विल हैव एंजो फर्नांडिस, देन यू विल हैव अ काइसेडो एंड यू विल हैव अ एंड्रो सैंटोस. ठीक है, तो वो हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल एज वेल, अगर इफ ही रियली इंप्रेसेस पॉच, दैट इज ओनली देन. नहीं तो आई डोंट सी प्लेइंग दैट वे. आई हो सकता है वी may not go for a Cherki, बहुत एक्सपेंसिव है Cherki for his age in my opinion, but बहुत अच्छा player भी है, two-footedness helps, so we might go for a little bit experience in Dybala as a plan B, who plays behind the striker, that is absolutely. Amrabat भाई, Amrabat लेकिन हम लिंक नहीं, मैं रियल बोल रहा हूँ practically, I would actually take him. I would take Amrabat सच में. Ampadu backup as best, that's what I'm saying. What happened to Kessie to CFC? नहीं, Messi is good, I covered that as well. The thing is, जैसे मैंने बोला ना, 3, अगर हम 3 flat midfield खेले ना with proper number 8 beside say an Enzo, then Kessie makes sense. But even then we already have an Andro Santos. ठीक है, तो I don't think वो एक बहुत burning need है. एंड्रो सैंटोस बहुत इनएक्सपीरियंस लाता है कंपेयर टू केसी, लेकिन केसी भी प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस नहीं लाता है, राइट? और केसी भी आई एम नॉट श्योर दैट ही विल रियली एलिवेट द लेवल. तो वो मैं बोल, तो केसी looks like Juve, looks more likely, क्योंकि वहां पर 2 midfielders are on the market. तो केसी might be one of the replacements for sure, and they play a middle 3 apart from the wingers. Juventus. बिल्कुल man, Kapil well said man, Kapil well said. Same here man, talent is not enough. Okay, let's see how it does. लुकाकू के बारे में हम शुरू किए थे, बहुत बात की है भाई. आप लोग टाइम पर आ जाए करिए यार भाई, सब लोग. मैं बार बार बोलता हूँ, आई कैन रिपीट, आई कैन गो ऑन एंड ऑन, लेकिन सब लोग भाई जो भी यहाँ पर आए ना, लाइक बटन तो दबाइए. आई एम जेन्युइनली टेलिंग यू दैट पीपल हियर, यू हैव नॉट हिट द बेल आइकॉन फॉर ऑल द नोटिफिकेशंस. मेनी हैवंट. ठीक है, आप लोग सब बेल आइकॉन दबाइए प्लीज, इट विल सर्टेनली हेल्प मी. The start to this stream, we had some loads of fun. Everyone, don't miss it out. Do watch that for sure. Absolutely. For what am I calling him a don? Just let me know if you haven't. Please hit that bell icon as well as the like button. Not just on the stream, but on the community posts as well always. And I've put a poll. Aj, do check that. Mark, what's up, man? Liverpool fan in the house. Nice to see you. Waiting for the moment when Lukaku says, "I am a childhood Juve fan." अरे भाई मैन, पूरी दुनिया बोलेगी फिर ये. अरे भाई क्रेजी मैन, क्रेजी. मार्शल अभी के लिए तो आपका बैकअप ही ना ऋतिक, मैनचेस्टर यूनाइटेड का, बट टेंशन नहीं है. सब लोग लाइक कर दीजिए एब्सोल्युटली. यूवे आफ्टर बाइंग फ्रॉडिलो लुकाकू बोलेंगे घंटा में. घंटा, यही खुद ही घंटा लटका के आएगा ब्रो, क्या ही बोले. ओके, लेट्स सी. जबार भाई बोल रहे हैं Poch should really focus on his substitution because his substitution sometimes has costed big matches. What do you think? नहीं, it's a good point. लेकिन he has admitted a lot of mistakes in the past. At the same time, ये भी बोला है that he believes that he has really improved as a coach over the last couple of years. अब देखते हैं वो break has helped him
Hopefully he has a lot of thought, इतना build up हुआ है towards his Chelsea career. Hopefully Poch has something good in store. लेकिन jury is out. Take it with a pinch of salt. Chelsea fans don't expect a bit too much. मैं तो बोलता हूँ realistically अभी as things stand अगर हम top 4 लेते हैं भाई I will take it. But थोड़ा कप रन भी हो जाए और एक कप फाइनल हो जाए भाई, ब्रिलियंट रहेगा. होपफुली वी विन दैट एज वेल. बहुत ज्यादा है आई नो, बट दैट्स व्हाट द रियल एक्सपेक्टेशन इज एंड द रियलिस्टिक वन एज वेल. कहीं ना कहीं टॉप 5 पता नहीं, नॉट श्योर इफ आई एक्सेप्ट इट हैप्पीली कंसीडरिंग मिडवीक फुटबॉल नहीं है. दैट्स व्हाट आई वुड से. बट एनीवे ओके, और भी यहाँ पर थोड़ा मैं बात करूं क्विकली. तो अगेन रिमेंबर ओबामयांग टू मार्सियल ने बताया था दैट इज क्वाइट ऑन वाला, और बार्सा का भी हमने बहुत कवर किया. वी हैव स्पोकन अबाउट PSG, we have spoken about Inter Milan, we have spoken about which others? I think Napoli थोड़ा बहुत, as well as of course Chelsea. Yeah, again big up to him यार. Again Ajax कहीं ना कहीं खत्म हो रही है, but again डिटेल में नहीं बोलेंगे because it's not a blue club, but let's just saying that he's someone who could be a target. आजकल क्या हो रहा है ना, clubs are not going for experience. I don't know for whatever reason. क्यों? क्योंकि value for money is something that they're looking at. A lot of clubs जो पहले जाते थे, especially say the non-EPL clubs, we used to go for a lot of experienced players. आजकल people are rather investing in youth. That's how it is. मुड्रिक पर क्या बात करें भाई. मुड्रिक यही बात करेंगे दैट पॉच का सिस्टम जो हम समझाए थे कपल ऑफ फ्यू स्ट्रीम्स बैक, आपको याद हो तो चेक इट आउट. आई थिंक सारांश शायद उस समय हम डिस्कस किए थे क्लियरली दैट पॉच लाइक्स aggressive pressing in the central core, or he likes switch off play, he likes his fullbacks to bomb on. तो वहां पर कहीं ना कहीं I can see him play a narrow core, और मुड्रिक Madueke might be impact players to begin with, not starters. Let's see, maybe I'm wrong, लेकिन hopefully he gets his touch with Poch, जो एक let's be real उसका heavy touch है as much as potential भी काफी है. चलो भाई, कंग्रेचुलेशंस अगेन. वी मिस्ड आउट ऑन हिम आई वुड से. अगेन बोलना चाहूंगा सोबोस्लाई ओनाना में हमने ट्राई भी नहीं किया. आई नो दैट दे वुड हैव एनीवे चोजन द क्लब दे हैव बिकॉज ऑफ यूरोप, बट लेट्स बी रियल, हमने ट्राई करना था बट एटलीस्ट. बट लेट्स सी. गौरव तो कॉन्फिडेंट नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ना, जूरीज आउट. लेट्स सी. ये क्या 1000 यूरोज कम दे दो पर उमटीटी लॉन्गले किसी को ले लो. वैसे भी चेल्सी में आइवरी कोस्ट. बट टॉकिंग अबाउट आइवरी कोस्ट, अच्छा याद दिलाया मुझे भाई, एक सिला करके बंदा है. I don't know how many of you all were following the channel on every UCL review stream. हमने एक review stream किया था last, I think it was match day 4 or 5. I'm pretty sure he played, yes, he played for Club Brugge. Silla is a left-footed center back. 20-21 साल का बंदा है, बहुत अच्छा Ivory Coast का center back है. And he is someone who has agreed to move, I believe, to Strasbourg, जो चेल्सी की बी क्लब होने वाली. एंड दैट कुड बी अ पोटेंशियल फ्यूचर. अगर हो सकता है कहीं ना कहीं चेल्सी का फ्यूचर प्लानिंग है, बाई चांस अगर लेवाई कॉलविल का कमिटमेंट नहीं मिलता है फॉर लॉन्ग टर्म, तो दिस माइट बी अ फ्यूचर गाय. सिला, रिमेंबर, ही इज एन एक्चुअल गुड गाय. पीपल SYLLA है. सिला गोइंग टू स्ट्रासबर्ग, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड साइनिंग फॉर पैट्रिक वियरा देयर. लेट्स सी. Timo One, what's up? Hope you're doing well. Absolutely, I hope you're good as well. Still think Inter is the winner in terms of Lukaku. They were paying 40 million for using Lukaku as a backup to Thuram. No, I don't think so. He will be a backup to Thuram. Thuram would be a backup in my personal opinion. Why? Because yes, last season अलग चीज थी, because remember वहां पर एक he was on loan. Plus Lukaku was not as fit towards the end of the season. I know कहीं ना कहीं चैंपियंस लीग जिताया है मैन सिटी को, people are saying, but I think उसका इम्पैक्ट था 2-3 गेम में. I know, हम jokes aside, we have to be admitting that he definitely had an impact towards the end. और कहीं ना कहीं इट्स गुड ब्रो. इंटर फैन सुन लीजिए और आप बिड कर दीजिए और भी ज्यादा. लेकिन लुकाकू तो अभी एवॉल है, एब्सेंट विदाउट लीव, बट कोई नहीं, अभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे भाई. विल कम बैक टू ऑलमाइटी स्पोर्ट्स कल. अगेन I would love everyone to join me on Almighty Sports when you do the streams there. I request each and everyone to hit the bell icon. Just takes a press of a button and the like button on our stream as well as both the channels. एक बार ही करिए in terms of the bell icon, लेकिन for all notifications Almighty Sports, क्योंकि यहाँ पर मैं जब करता हूँ there are few people asking about cricket, वहां पर करता हूँ कुछ लोग asking about football. तो guys come on let's have it. और ये all blue show है guys, तो let's stick to the topic guys. Much love. नहीं, I don't think so Priyansh, is too old. and Chelsea का जो अलग अभी प्रोजेक्ट है उसमें फिट नहीं बैठता ना, नहीं तो हम बहुत सारे और ऑप्शंस ले लेते ना पहले. यस, आई थिंक दैट्स अ ब्रिलियंट वन इन माय ओपिनियन. भाई
अगेन इंग्लैंड में नहीं होने वाला पुदिन, इसलिए हमने डिटेल में बात नहीं किया है, एज वेल एज मेजर लीग्स में अभी तक नहीं इंट्रोड्यूस किया गया है. व्हेन आई से मेजर लीग्स आई मीन द टॉप 5 लीग्स. बट अगेन दिस इज समथिंग व्हिच माइट बी गुड, थोड़ा और ज्यादा एक्साइटमेंट लाएगा. थोड़ा सा मैं ओल्ड स्कूल में बोलूंगा, बहुत ज्यादा ही चेंज है, बट अगेन ओपन टू चेंज यार 100%. ही इज अ सेंटर बैक ब्रो, ही इज अ सेंटर बैक, ही इज अ लेफ्ट फुटर सेंटर बैक. अमन, now the Inter is out of the race. I hope some other team buys him. I hope so too. Juventus, लेकिन again अगर व्लाहोविच जाता है फ्री तो टाइम लगेगा. It will not be sorted just like Mbappe very soon. Again बहुत लोग लेट आ रहे हैं, asking me the same things. I would just repeat. तो भाई थोड़ा टेप रिकॉर्डर से लगूंगा ना, वही चीज रिपीट करूंगा. तो I hope I can respect you, you can respect me and watch from the beginning of the stream. आप लोग जो लेट आ रहे हो और आप लोग बोल रहे हो asking me about cricket, let's talk about that on Almighty Sports. Asking me about a lot of things that we have spoken in the last 1 hour 5 minutes. Try and rewatch the stream. Try and hit that bell icon for all the notifications, because भाई अपना भी टाइम इंपॉर्टेंट जैसे your time is important. But much love for coming on for sure. But I think we have discussed end to end. Yeah, almost we have discussed end to end. Gabri Veiga, again it's in the air. Abhi it's very early days. I know abhi bhi are discussions ho rahe hain. He might go to Man City or a PSG. It depends on what will be the situation of say Calvin Phillips in Man City. I know he's not a DM. Gabri Veiga is more like a number 8. लेकिन कहीं ना कहीं मिडफील्डर है, तो वो एक important जिक्सॉ पजल है to be solved. But talk about blue clubs, bhai. Leicester City ka Harvey Barnes to Newcastle looks like it's going to be here we go very soon. That is definitely going to happen. And of course, meanwhile, apna blue club bhai Chelsea se finally official ho gaya. Christian Pulisic going to Milan. Wish him all the best for sure. But I think yeah, we have more or less completed all the transfers of all the blue clubs, and generally हमने discuss कर लिया है. Again, आप लोग जो भी यहाँ पर आइए, ये बोलिए whichever club you are. As things stand, based on this transfer stream, based on the recent transfer news, based on the likelihood, what is your starting 11? Everyone in the chat, aap log boliye. If you're a Chelsea fan, do let me know in the comment section who is going to start for you as things stand. What is your ideal starting 11 and formation for your particular blue club? Let me know in the chat. Okay. Okay. ब्राइट फ्यूचर, देखिए यार दोनों ही बहुत, मैं तो अगेन जैर आपने शायद लास्ट कपल ऑफ स्ट्रीम शेयर देखा नहीं होगा, वोंट लाइक टू रिपीट इन डिटेल, बट ऑल आई एम सेइंग इज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट आई एक्चुअली रेट, अगर एम्बापे टू रियल मैड्रिड हैपेंस व्हिच इज क्वाइट लाइकली इफ नॉट नाउ एटलीस्ट बाय जनवरी, तो आई विल रेट रियल मैड्रिड का ट्रांसफर विंडो स्लाइटली बेटर, क्योंकि बेलिंगहम और एम्बापे विद इन 6 months लेना, भाई व्हाट अ विंडो. लेकिन बार्सिलोना को भी मैंने दिया था माइटी रेटिंग which is about 8 out of 10. रियल मैड्रिड को दिया था 9 out of 10 अगर एम्बापे हो जाता है. As things stand, I would say that considering they had already a lot of youngsters, both the teams, I think कहीं ना कहीं बहुत close fight होगा. I think कहीं ना कहीं I'm just as a neutral would love to watch them. I'm not trying to stay on the fence. I genuinely believe that Real Madrid are the team to beat right now, but Barcelona are definitely there in the UCL as well, not just La Liga में for sure. और कहीं ना कहीं बारसा का जो स्टेडियम दे नॉट गोइंग टू प्ले इन कैंप नो इस बार, थोड़ा सा आई थिंक यू गाइस विल नो दैट विल मेक अ डिफरेंस फॉर श्योर, जो रियल मैड्रिड का भी था इन दैट वन सीजन, रिमेंबर दैट. अगेन मुबाशिर चेक करिएगा वापस, बहुत डिस्कस कर लिया मेरे भाई ऑलरेडी. भैया डोंट यू थिंक इंटर डिलेइंग लकाका ट्रांसफर सो दैट दे कैन गेट हिम ऑन लोन और वेरी चीप? नहीं, इनफैक्ट बढ़ाया है, तो 30 से 35 मिलियन प्लस 5 मिलियन हुआ है, इसलिए इंटर नाखुश है ना अबाउट. आई नो इट माइट बी अनदर स्कैम, बट इसलिए नाखुश है बिकॉज आफ्टर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ देयर बिड, जो बहुत ही चिंदीगिरी करती है इंटर, लेट्स बी रियल अबाउट इट, एज मच एज आई वुड लाइक टू रिस्पेक्ट देम. तो उसके बाद में लुकाकू एवॉल चले गए भाई, गायब हो गए, सिंपल एज दैट. नहीं है. Not really Ritik, which video are we talking about? If you can forward me, bro. Forward करिए Ritik, again मुझे DM करिए. I'll add you to the group. Discuss why Arsenal are biggest club in England. Oh, nice comment, bro. Nice comment. Thank you. It's an almighty blue show. Remember, it's an all blue show, so no Arsenal right now. Congratulations for signing, but कोई नहीं. Haters welcome always. But if you're just bantering, it's totally fine. No problem. Liverpool starting, और by the way, let's be real. The लेट्स, अब मैं यहाँ पर बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन बता देते भाई, पीपल माइट गिव मी हेट बट इट्स अ फैक्ट. फैक्टोस, आई ओनली वॉमिट फैक्टोस. फैक्टोस क्या है भाई? देखिए ऐसा हुआ ना, आई नो लॉट ऑफ साइनिंग्स आर्सेनल हैज मेड, थोड़ा बहुत आई नो ऑल ब्लू शो में क्यों बात करो, लेकिन यहाँ पर टारगेट्स थे फ्रॉम चेल्सी, काई हावर्ट्स, जॉर्जिनियो, ऑफ कोर्स डेक्लन राइस, नेक्स्ट चेल्सी मैन, पीपल फॉरगेट, of course, have gone to Arsenal.
कंग्रेचुलेशंस, बहुत एलिवेट करना है टीम एब्सोल्युटली आर्सेनल का 100%, वो लोग 100%, नो टू वेज अबाउट इट. बट when was the last time, please tell me bro, when was the last time Arsenal won a cup in Europe? Please, anyone, can you tell me which European trophy has Arsenal won? मुझे बहुत डीएम्स आ रहे हैं. आई नो पीपल आर सेइंग भाई ये क्या यार, ये गलत हो गया, क्रॉसिंग द लाइन. करूंगा भाई, करूंगा. मुझे बहुत डीएम्स आ रहे हैं. आई नो 5 people are dropped watching. चेल्सी आर फिनिश, चेल्सी आर दिस. एक सीजन भाई, फुटबॉल एक सीजन के लिए भाई इनफ देखा है मैंने फुटबॉल टू टेल दीस थिंग्स. इनफ देखा है. एंड आई genuinely believe that basically for all the people questioning Chelsea, you know, somewhere down the line we will come back for sure. All respect to all the clubs, it's always a fan channel for all to see, and you guys know that. But for people saying that यहाँ पर कहीं ना कहीं भाई biggest club in London, biggest club in England, भाई घंटा क्या जीता यार, कोई बता दो मुझे यार, क्या जीता यार. चलो बोल रहे आपकी क्लब 25-15 साल 10-15 साल से ना बोल रहे ना, 30 साल काउंट करो यार. चलो आपको दिया लास्ट 30 years, ठीक है. कितने लोग हैं चार्ट में जो 30 साल जिए भी है? 30 साल कितने जिए भाई? लेट्स बी रियल. हम घंटा किए थे लास्ट सीजन, एब्सोल्युटली शिट वी वर. लेकिन फॉर पीपल टेलिंग मी दैट यू नो वी आर एब्सोल्युटली नोवेयर, भाई आज के जो प्लेयर्स है ना बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं भाई सोशल मीडिया. आई बी वेरी ऑनेस्ट, कंग्रेचुलेशंस अगेन डेक्लन राइस, Kai Havertz, Julian Timber, and the others, whoever is going to Arsenal, are not going to Arsenal to win the Champions League. Again, when was the last time that you won anything in Europe? Just asking. Anyway, that is enough saying. हाँ नहीं यार, करना यार. बहुत सारे डीएम्स आए मेरे भाई, और करते यार. हम तो घंटा जानते हैं मेरे भाई, हम तो घंटा जानते हैं ना. लेकिन द फैक्ट इज आई रेस्पेक्ट एवरीवन. आप जबरदस्ती अगर मुझे हेड दोगे कि चेल्सी इज फिनिश्ड, बिगेस्ट क्लब, ये वो सब बोलेंगे तो मैं भी जवाब दूंगा. ठीक है, सिंपल सी बात है. उंगली करो एब्सोल्युटली, बट अप टू अ सर्टेन पॉइंट. और मुझे बहुत आए, मैं देख रहा हूं, लेकिन कोई नहीं. हेट नहीं यार, दे आर ओवररेटेड. प्लीज टेल मी व्हाट द ब्लडी हेल डिड दे विन लास्ट सीजन? प्लीज समवन टेल मी. मैं वेट कर रहा हूं. व्हाट डिड आर्सेनल विन लास्ट सीजन? अ फ्यू स्माइल्स. Man, wow. And people, I respect a lot of ex-footballers and respect them as a club. But social media of Arsenal, man, let me tell you, honestly. Let's see. Future is bright, but future में जियो बस. हम लोग का भी future is bright. हम अभी, including my club, हम भी घंटा कर रहे हैं अभी, absolutely. लेकिन हम future में जी रहे. वो लोग भी future में रह रहे. यहाँ पर simple as है, but कोई नहीं. Why Barcelona का मुबाशिर नहीं रहने वाला इस बार. चलो भाई, एनीवे, बिगेस्ट क्लब वो सब का कोई बात नहीं करने का, ठीक है. तो दोस थिंग्स आर टोटली ऑफ द सिचुएशन. बट यस, दिस वन आई अग्री. जैसे आप लोग सुने होंगे इन द रेस्ट ऑफ द स्ट्रीम, होपफुली आप लोग देखे भी हो. एवरीवन, अगेन गिव अस अ चांस. घंटा गाएंगे, लेकिन गिव अस अ चांस. अगेन बिग अप टू द फैम. रेस्पेक्ट एवरी क्लब फॉर श्योर. लेकिन कोई मुझे उंगली करेगा तो मैं चुप बैठ लूं, मैं वाले से नहीं हूं, ठीक है. एब्सोल्युटली करो, जानबूझ के करो, हेटर्स एब्सोल्युटली वेलकम, ठीक है. लेकिन आप देख सकते हो जो हमने डिस्कस किया. वी हैव डिस्कस्ड द कॉलवेल सिचुएशन, वी हैव डिस्कस्ड द काइसेडो सिचुएशन, वी हैव डिस्कस्ड द एम्बापे सिचुएशन, वी हैव डिस्कस्ड द लुकाकू सिचुएशन, एंड अ लॉट ऑफ अदर सिचुएशंस. सम ब्रेकिंग ट्रांसफर न्यूज एज वेल इन टर्म्स ऑफ सिटी, not just Chelsea, and a couple of other blue clubs, including Inter Milan, Napoli, and Barcelona as well. No one is humiliating anyone, my brother. No one is humiliating anyone, but that is of pure facts. I am just throwing pure facts. Definitely, जो मीडिया है ना, इंग्लिश मीडिया, लेट्स बी रियल अबाउट इट, इतना ज्यादा प्रेज करता है ना भाई. देखिए, आई कैन सी दैट देयर आर आर्सेनल फैंस इन द चैट, आई कैन सी दैट देयर आर लिवरपूल फैंस इन द चैट, इवन लिवरपूल फैंस. सॉरी यार, आप लोगों को लगेगा हेट है, लेकिन मैं प्योर फैक्ट्स फेंकता हूं. पहले मैं बोलता हूं डिस्क्लेमर, मेरी खुद की क्लब है. अगेन, आई फॉलो फुटबॉल, बिकेम, आप लोग नो योर क्रिएटर चेक कर सकते हो फॉर पीपल और न्यू वॉचर्स. यू कैन चेक हाउ आई बिकेम अ फैन. I first became an international football fan, then I became a club football fan, and that is why I believe it's a fan channel for all to see. Watching for 25 years, मुझे हक है बोलने का, because मैंने देखा है. इवन आप लोग को भी हक है, जो भी लोग देखे.
With all due respect, and Liverpool and Man City have been the better clubs in the last 7-8 years in the country for sure. No two ways about it. ठीक है? Let's be real. But इन 7-8 सालों में इंग्लैंड में, आई रिपीट, इंग्लैंड में क्या जीता है लिवरपूल ने अपार्ट फ्रॉम प्रीमियर लीग? तो अगेन नथिंग अगेंस्ट लिवरपूल एज अ क्लब, ग्रेट क्लब, आई लव क्लब, होप कि यार वो कभी बनता चेल्सी मैनेजर, बट नो, अनफॉर्चुनेटली नॉट. बट द रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि इंग्लिश मीडिया ना भाई आपको देखने में ओ क्या फुटबॉल खेल रहे हो वो हो जाता है. पीपल थिंकिंग मैड, बट नो होता है. इंग्लिश मीडिया ना ऐसे इतना हाइप कर देते हैं ना, भाई क्या जीता है ब्रो. चलो लिवरपूल एटलीस्ट हैव वन द चैंपियंस लीग इन दैट ड्यूरेशन, फेयर इनफ. सीरियसली मैन, मतलब इफ एनीवन इज गिविंग मी हेट फॉर वन सीजन, I would give hate for my own club's players and the managers who've done shit. But to tell that basically we are nothing, and just because we are not in Europe one season we cannot attract any players is absolutely bulla crap. ठीक है, let's be real about it. ठीक है, लास्ट 25 सालों में जितना चेल्सी ने किया है, इवन नाउ मैन सिटी इन द कॉन्वर्सेशन जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड ने किया है, आई डोंट थिंक एनी अदर क्लब्स इन इंग्लैंड हैव डन, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू लिवरपूल, आर्सेनल और स्पर्स की तो भाई लेट्स नॉट इवन स्टार्ट. ठीक है, एंड दैट्स द थिंग. और हमें इंग्लिश क्लब्स के बारे में बोल रहा हूं बिकॉज ऑफ सर्टेन कमेंट्स एंड सर्टेन डीएम्स दैट हैव गॉट इन द लास्ट फ्यू डेज एज वेल एज सोशल मीडिया. तो इतना, और इंग्लिश मीडिया सर्टेनली बोलता हूं, बिग अप टू देम, डूइंग वेल, एब्सोल्युटली प्रॉमिसिंग. लेकिन इवन प्लेयर्स मैन, लेकिन ये सच्चाई भी है, थोड़ी बहुत सच्चाई की है, डबल स्टैंडर्ड, फैक्ट्स में बोल रहा हूं वापस, नॉट फॉर माय क्लब, दिस अगेंस्ट माय क्लब. अगर हम यूरोप में होते, प्रीटी श्योर, मैं नहीं बोल रहा हूं कि हमें मिलता, प्रीटी श्योर वी वुड हैव गॉन फॉर अ बिड in terms of Declan Rice as well as Kylian Mbappe. I am pretty sure on that. लेकिन अब देखते क्या होता है. अभी तो even Neymar is not going to come. Let's be real about it. Yeah, that's actually a fact in terms of Europe. Let's see. कोई नहीं, बारसा हो गया भाई. स्पोर्ट फ्रीक, बिग अप यार, बिग अप, शाउट आउट है आपको भाई. देखिए 1 घंटा 17 मिनट तक लाइव है मेरे भाई, तो मैं बार बार रिपीट नहीं कर सकता. मैं बहुत बात किया हूँ. इट्स एन ऑल ब्लू शो. वी हैव ऑलवेज, इट्स अ 5th or the 6th episode that we're doing all blue show. Hopefully you guys like it. वो कैसे आप जाहिर करेंगे, आप अगर डिसएग्री करते हो मेरे कमेंट से, टोटली फाइन, आप लेकिन लाइक बटन दबा दीजिए. पर्सनल अटैक नहीं कर रहा मैं कुछ भी. आप लोग मुझे पर्सनल अटैक करते हो, नॉट एवरीवन, बट देयर आर कपल ऑफ पीपल इन द चैट एज वेल एज द डीएम्स, तो दे हैव डन इट इन द रिसेंट पास्ट, तो इसलिए मैंने रिएक्ट किया. लेकिन आई एम जस्ट थ्रोइंग फैक्ट्स, आई एम नॉट ट्राइंग टू डिग्रेड एनीवन. लेकिन आपको पता है वी हैव डिस्कस सो मेनी थिंग्स, जस्ट नॉट चेल्सी जो ऑब्वियसली डिस्कस किए ना ऑल ब्लू शो, बट आल्सो मैन सिटी, PSG, Barca, Inter Milan, Napoli. We have discussed so many transfer stories as well in this. Or again, comment karna starting 11 for all your clubs by all the blue clubs, and we'll come to the other news, other content like quizzes etc on both the channels. उसके लिए आपको bell icon दबाना पड़ेगा for all the notifications. संजीव बोल रही है Ter Stegen, राहो, कुंडे, क्रिस्टियनसन, बाल्डे, रोमेयो, डियोंग, पेड्री और गुंडोगन. ओके, तो आप गुंडोगन और पेड्री से एक ही खिलाओगे. इंटरेस्टिंग. यस, रोमेयो शुड जॉइन. 5 मिलियन प्लस पैब्लो टोरे शुड डू द जॉब इन माय ओपिनियन. मेसी इज गुड बोल रहे हैं. सिल्वा एंड रोमेयो ये सोच रहे हैं. चलो, बिकॉज देयर इज a news today which we have already discussed, so let's see best case scenario बोल रहे हैं. कुंडे, अराहो, क्रिस्टियनसन, फ्रैंकी डियोंग, रोमेयो, सिल्वा, गुंडोगन, पेड्री, गावी एंड लेवा. Subs बाल्डे, नहीं यार, बाल्डे शुड स्टार्ट इन माय ओपिनियन. नहीं, मैं बोलता हूँ भाई, 1 मिनट मोटिवेशन. अगेन बिग अप टू यू, ऑफ कोर्स स्पेशली आपको, क्योंकि आई नो दैट यू आर सपोर्टिंग द चैनल ऑलवेज. भाई देखिए, द फैक्ट इज, डू नॉट गो बाय माय वन स्टेटमेंट इन वन स्ट्रीम आउट ऑफ 1000 वीडियो जो हमने किया ऑन ऑलमाइटी स्पोर्ट्स एंड ऑलमाइटी ब्लूज. ठीक है, तो फॉर पीपल टेलिंग दैट आई प्रोटेक्ट ऑल माय प्लेयर्स एंड ऑल माय थिंग इज अ टोटल बुल्ला क्रैप. आई एम नॉट टेलिंग यू, बट जनरली इफ एनीवन इज टेलिंग. ठीक है, जो लोग देखे नहीं है ना मेरा वॉच अलोंग, आई मिस्ड अ लॉट. मैं कितना गाली दिया हूं मेरे खुद के प्लेयर्स को, मुझे ही मालूम है इस पूरे सीजन में जो गया. एंड आई एम स्टिल सेइंग वी हैव एब्सोल्युटली शैट ऑन इन अ पैंट्स लास्ट एंटायर सीजन. We don't, these players were absolutely shit. But to tell that we as a club are nothing for the last 27 years, and mind you, मैंने देखा है भाई 97 में जब हमने कप जीता था. ठीक है, तो I know what I'm talking. Anyway, let's see. मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया. ऑस्कर, बिग अप टू यू एज वेल. चलो, यहाँ पर
Let's see. Again, jury is out. Arey, Manav, what's up, man? Manav exactly knows what you're talking about. Exactly, man. Big up to Manav. भाई मानव, कल का आपने बोला ना, most probably Manav will be coming on. मेरे ख्याल से I have a couple of availabilities for who am I, but I'll just confirm. ठीक है मानव, I'll confirm you by morning. Is that okay भाई? लेकिन big up to Manav as well. Hopefully we'll have a who am I quiz कल. बिल्कुल बिल्कुल. चलो यहाँ पर देख लेते हैं. ऑल ब्लू शो है, बट आई जस्ट हाईलाइट दिस क्विकली. रियल मैड्रिड फैन. लेट्स सी. Balde for me is top 5. Yeah, I think Nuno Mendes, Balde will probably get there at that level for sure next season. I genuinely believe it. How do you see Kepa as a number one next season? Again, I think we have missed out on Onana, bro. I genuinely believe it that हम try भी नहीं किए कहीं ना कहीं. I know that we go with the project. We are not convinced maybe with Onana for whatever reason. लेकिन मुझे लगता है that was a needed position. लेकिन ठीक है, मे बी एक रीजन हो सकता है क्योंकि हमारी डीएनए मिसिंग है. बहुत सारे प्लेयर्स हमारे मिडफील्ड से चले गए हैं, स्पेशली पीपल हु आर ईदर कॉबम बॉयज और नोइंग चेल्सी एंड वन ऑफ द चैंपियंस लीग एंड क्लब वर्ल्ड कप एंड यू नो व्हाट नॉट. तो मे बी केपा बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स चेल्सी कहीं ना कहीं एंड वी आर नॉट एबल टू गेट रिड ऑफ हिम. ही विल बी अ नंबर 1 बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, ही इज वेरी एक्सपेंसिव टू बी अ नंबर 2. ऋतुराज, I saw your comment, but I cannot highlight that मेरे भाई. But कोई नहीं, मतलब I won't generalize. There are certain very very quality fans as well. I'm not going to generalize यहाँ पर, but ठीक है. मतलब I won't really dwell into it too much ऊपर मगवायर, क्योंकि एक प्री सीजन है, पहला मैच है, तो it's too early for me. Absolutely. शिखर इन हाउस बोल रहे बाल्डे, क्रिस्टियनसन, अराहो, कुंडे, फ्रेंकी डियोंग, गुंडोगन, पेड्री, गावी, लेवा, रेफिनिया. भाई चेल्सी फैंस आप लोग भी बोलिए यार, आपका 11 क्या होगा? पीएसजी, I know I'm talking about PSG fans, which can be a problem. I know there are a couple of them in the chat, लेकिन actually है. ये क्या है भाई? चेल्सी फैन भी तो मजाक उड़ाया कितने साल जेरार्ड स्लिप का, तो फैंस पे चलता रहता है. बिल्कुल बिल्कुल. ऋषिकेश, आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू डिटेल्स इनटू द काइंड ऑफ डीएम्स आई गॉट. आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू डिटेल्स इनटू द काइंड ऑफ tweets that I'm seeing, but there is a certain section for sure. Again, मैं generalize नहीं कर रहा मेरे भाई. Big up to you. I know that you always support the right things and always I do, because मैं जहां प्रेज करना है मैं प्रेज करता हूँ, जहां पर क्रिटिसाइज करना है मैं क्रिटिसाइज करता हूँ, बी इट माई क्लब और अदर क्लब्स. दैट्स हाउ इट इज. इट्स अ फैन चैनल फॉर ऑल टू सी फॉर अ रीजन एंड इनफ. देखा है भाई 25 सालों में एंटायर फुटबॉल में टू काइंड ऑफ हैविंग दैट राइट. आई होप सो, राइट? लेकिन कोई नहीं. Again, hats off to the academy, bro. That's all I can say. But again, big up to everyone यहाँ पर. I think Chelsea fans यहाँ पर गायब हो गए all of a sudden. But कोई नहीं. Everyone who's here, again remember to comment with your club starting 11 going by the transfer news जो हमने बताया in the last few days and this stream, which is likely, which is unlikely. कौन सा starting 11 रहेगा आपके लिए? Again, we are focused on the blue clubs आज because it's an all blue show, but we'll come back to all the transfer talks end to end no matter what. Again, all blue show है, वापस बोल रहा हूँ, तो I'm not going to discuss on Juventus, Real Madrid in detail in this particular stream. लेकिन we have discussed Juventus थोड़ा बहुत, like Kessie, because he's going from Barca to Juventus. We have discussed Lukaku situation, we have already discussed. तो देखते हैं. Again, Chiesa हो रहा था चेल्सी में लिंक्स, लेकिन like a Neymar, I don't see it happening. By Pudin, finally we found Atrinandan and Pudin putting in their teams. Kepa, Bardeshil, Fofana, Reese, Chili, Enzo, Caicedo, Santos / Casadei. Yeah, Casadei I really doubt will be a starter. I don't think so. Nkunku, Mudryk and Madueke. Again, eventually हो सकता है, लेकिन I'll be really surprised अगर Sterling doesn't start. And it pains me to say it, but it's a fact. Atrinandan, Kepa, Rice, Fofana. हाँ, राइस कहाँ से आ गया भाई? अत्रिनंदन, ब्रेकिंग न्यूज, आर्सेनल टू चेल्सी हो गया क्या राइस? गलती से ऑब्वियसली, नो प्रॉब्लम. बारेशिल, चिलवेल, कैसेडो, एंजो, मुड्रिक, एंकुंकू, मडवे. बहुत लोग बोल रहे हैं एंकुंकू, मडवे के ब्रोया को स्टार्ट्स मिलेंगे. आई थिंक दे माइट बी इंपैक्ट प्लेयर्स ऑन द बेंच. आई जेन्युइनली बिलीव दैट. लेट्स सी. बट अगेन यूनाइटेड का भी देख लेते हैं भाई क्विकली. ओके भाई, टू बी ऑनेस्ट कोर स्ट्रांग लग रहा है आपका डेफिनेटली लग रहा है, मुझे लगता है. लेट्स सी. निवेश तो बोल रहे हैं केपा, रीस, सिल्वा, Colville, Chile, Enzo, Caicedo if signed. Yes, Nkunku is number 10, Mudryk, Sterling, Jackson. Okay. और अगर दिबाला आ जाता है, दिबाला, चेरकी, तो you're still seeing this 11 still? That's a big question. लेकिन is that defensive enough, that midfield? I don't know, man. वो थोड़ा सा कंसर्न है मेरे लिए. देखिए सब लोग वही बोल रहे, कैसेडो, एंजो. आई थिंक द फैक्ट इज जो बॉम ऑन करते हैं ना फुल बैक्स, थोड़ा सा डिफेंसिव होगा.
बट कोई नहीं, चलो कोई नहीं. मुड्रिक एंड एंकुंकू कैन स्विच. हाँ, आई थिंक एंकुंकू विल बिल्ड अराउंड एंकुंकू एंड एक्सपीरियंस एक रहेगा. आई थिंक अगर दिबाला आ जाता तो दिबाला माइट बी देयर, नहीं तो स्टर्लिंग विल बी देयर इन माय ओपिनियन. आई जनरली बिलीव एंड लेट्स सी इफ ही कम्स अराउंड रायन चेरकी, ही विल बी अ बैकअप फॉर श्योर. लेकिन अगर हम खेलेंगे प्रॉपर 4-3-3 देन आई थिंक एंड्रे सैंटोस प्रोबब्ली स्टार्ट्स एंड रायन चेरकी के लिए हम नहीं जाएंगे. We might actually go in extra number 6 and which might be Romeo Lavia beating Liverpool. Let's see. But anyway, bye, big up to everyone who's joined. Again, much love for everyone. Again, मैंने पता है थोड़ा बहुत बैंटर चलते रहता है, बट मेरे तरफ से भी मान लो यार. लुकाकू के लिए तो बहुत बैंटर हमने दिया है ब्रो. लुकाकू के लिए भाई, यहाँ पर इंटर बोल रही है. नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई. लेकिन लुकाकू का कैंप क्या बोल रहा है भाई? शेमलेस बगर्स. I'm here to tell you right now, we don't care. Let me tell you, We don't care. But anyway, man, good fun, bhai. I hope you guys had fun. But in the end, भाई यूवेंटस के फैंस को ये बोला था ना लुकाकू ने. अब लेकिन पूरा विंडो होने के बाद लुकाकू विल गो एंड जॉइन द यूवेंटस कैंप. कोई नहीं. अगेन बिग अप टू एवरीवन यार. बिग शाउट आउट टू एवरीवन, स्पेशली द मेंबर्स एंड मॉड्स. जो भी लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं मेंबरशिप टैरिफ्स, डू चेक इट आउट. सर्टेनली देयर इज अ लॉट टू बी डिस्कस्ड. अगेन रिमेंबर, जो मेंबर्स बनते हैं यू डू गेट शाउट आउट्स का प्रायोरिटी. यू डू डेफिनेटली गेट सोशल मीडिया टैग्स व्हेन आस्क्ड फॉर एंड व्हेन you get at a certain level. Plus, if you are a creator as well and if you're a member, if you are basically an almighty board member like Sport Freak is, you have a possibility in the future to get on the panel, not just be part of member streams and a lot more. तो भाई बहुत सारी चीज हम कर रहे हैं, but there's a new level that we have started which is basic cost. So do check it out guys. So quick मैं ऐड दिया हूँ, लेकिन worth it for sure. Much love, not just almighty sports पे भी. कल मिलेंगे. Love you all.